पाकिस्तान क्यों नहीं बना लेता फेस मेकर ऐसी? Okay, ji. So we are going to start. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the online session of clinical examination for FCPS Cardiology 2022. So today we have arranged a mock online TOACS mock examination for you on your demand. And today we'll be having three speakers with us. So the first speaker is Dr. Syed Nauman. Dr. Syed Nauman is FCPS Cardiology, FACC, and NBE, that is the Echo Board certification. He is currently Assistant Professor of Cardiology and Interventional Cardiologist and the Director of Cardiac Cath Lab in the Cardiac Center, Bahawalpur. And other than Dr. Nauman, we have our second speaker, Dr. Madiha Fatima. Dr. Madiha Fatima is FCPS Cardiology, EECC, that is European Examine for Cardiology from ESC, and also heart failure certification from European Society of Cardiology. To the best of my knowledge, I think she is the first Pakistani ever female cardiologist to have this heart failure certification from European Society of Cardiology. Currently, she is working as clinical fellow at NICBD in the emergency department of NICBD Karachi. And third is myself, and I guess all of you know me. I'm Dr. Haseeb Raza, and I am FCPS Cardiology, EECC, heart failure, cardiac electrophysiology, and I do a lot of things. Currently, I'm working at MIC Multan. So without any delay, because we have a lot of stations prepared for you, what we are going to do is for each station, we will be giving you 2 minutes. आपके पास 2 मिनट है, आप स्टेशन देखिए, क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और उनके आंसर राइट डाउन कीजिए अपने पास. ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर एंड टेक द रियल फील ऑफ द मॉक एग्जाम. इस तरह के मॉक एग्जाम बार बार ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, सो टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट. Do not just sit down and relax and just enjoy it. Try to get involved in it. आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं और आपने इसको हल करना है at any cost. ठीक है जी. So with this, I will invite my first speaker, Dr. Syed Nauman. अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई, कैसे हैं आप? वेलकम अस्सलाम हसीब, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ जी. ठीक है. जी वेलकम टू प्लीज ऑल सर. पार्टिसिपेंट्स. तो हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले. तो ये क्लिप्स हैं. पहले एको के क्लिप्स आप लोग देखेंगे और फिर एनजीओ के देखेंगे. अपनी असेसमेंट आप कुछ करें, उत्तर हैं और कुछ आंसर्स हमने दे दिए, कुछ हम डिस्कस कर लेंगे. हर क्लिप के बाद मैं आपको बताता जाऊंगा कि व्हाट आर द आंसर्स, और आप खुद भी कर जी जी. सकते हैं. तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन. जब आप शेयर करेंगे तो सर मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा. वी विल वेट फॉर 2 मिनट और फिर मैं आपको बता दूंगा, देन यू कैन एक्सप्लेन द स्टेशन. अच्छा चलिए जी, मेरी स्क्रीन अब शेयर हो रही है आपके साथ. जी हो रहा प्लीज. है जी. जी जी भाई. So here is a clip one, which is 50 years old female with STEMI. She is in cardiogenic shock and she is on inotropes. So our questions कैन are. एवरीवन कैन सी इट? एवरीवन कैन सी डॉक्टर मदिया? आपको शो हो नहीं रहा है? नहीं 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 सर, की सिर्फ जो फर्स्ट साइड है ना वो शो हो रही है. ओके सर, दोबारा से स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर कीजिएगा. Okay. जी अब शो हो रही है. Okay. So here is a question. Clip number one, 50 years old female with STEMI. She is in cardiogenic shock and she is on inotropes. So our questions are: what are the findings, what is the diagnosis, and what is the treatment? Time starts now.
ओके जी, 2 मिनट्स अब जी डॉक्टर नमान। So here are the answers. This is apical 4-chamber view. We can see the hyperkinesis of the basal segments and the distal akinesia. Distal LV segments are akinetic. And in the second image, you can see the CW Doppler applied to the LVOT, and we can see a gradient. Or there is a SAM which is clearly visible in the even in the 2D image. So as the patient is having STEMI and there is hyperkinesis of the basal segment, so the diagnosis is dynamic LVOT obstruction. So what is the treatment? Treatment is hydration, beta blockers, and gradually off the inotropes. So I hope so this will be interesting, and we will move on to the second clip. So here is our clip number 2. This is 22 years of young male who presented with palpitations and shortness of breath. So our questions are: what are the views? What are the main findings in each? And what is the treatment? क्लिप शो नहीं हो रहा सर। जी now. टाइम Can स्टार्ट। see Haseeb? जी 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 मुझे जी स्टिल इमेज है ना सर, वीडियो नहीं है। Hmm. टाइम अप। Okay. So there are three basically clips of three different modalities of echo, and here are some points related to this. First one is the color Doppler, which is a color M mode and applied from the suprasternal notch, and you can see the hollow diastolic flow reversal, which is of red color. You can see the whole this whole red color is basically the reversal flow is going towards the probe. So this is all through the diastole. So it is hollow diastolic flow reversal, which indicates severe aortic regurgitation. And this is the M mode and the mitral valve reflex. And you can see the fluttering of the AML, just like feathering and small feathers on the AML. So there is fluttering of the leaflets, which also suggests that the air jet is severe and striking the AML. And this is the CW, which is applied to the same image, and you can see the reversal. So when there is a reversal, especially in the abdominal aorta, so it is always severe AR. So our answers are these: color Doppler
AML fluttering due to aortic regurgitation, PW Doppler of the abdominal aorta, which can see the flow reversal, and the diagnosis is severe AR and the treatment is ABR. So these all are basic clips. Now moving on to the third clip. This is 20 years old male boy with a history of weight loss and anorexia for the last 2 months. The questions are: what is the main finding? What is the most likely pathological diagnosis expected? How will you manage your patient? Time starts now. Two minutes up. Okay. So here are our questions, which is 20-year-old male with anorexia and weight loss. So what is the main finding? Main finding is the multiloculated mass in the right atrium, and it is protruding to the tricuspid valve, and you can see the pericardial effusion. And there is also pressure on the RV as well. So this is multilobulated invasive mass, which is RA attached to the RA free wall. This pericardial effusion and RV free wall collapse. So the most likely expected pathological finding is it is a malignant tumor, and the most common malignant tumor on the right side in the RA is angiosarcoma. So what treatment is expected is surgical resection and chemotherapy, and the poor patient died before doing anything. So this is the most expected pathological finding in this case. Now moving on to our fourth clip. It is 60 years old female with rapidly progressive severe shortness of breath and orthopnea. The questions are: what are the findings in the upcoming images? What is the diagnosis? And what is the underlying disease in this patient? Time starts now.
क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिएगा सर। टाइम अप। Okay, coming to the answers. So one by one each clip. We can see the biatrial enlargement, and we can see the myocardial texture is somewhat different, bright, and we can see the pericardial effusion, and we can see the annulus is hardly moving towards the apex. Although we don't have applied the tissue Doppler, but we can see that this annulus, both annuli are static. So uh, this is the strain image and bullseye map, and you can see there is red is normal and the pink is hypo and blue is akinetic. So there is the apical sparing of the LV. Rest of the segments are have reduced longitudinal strain. So the apex is moving normally. This is the spirometer applied PW of the hepatic vein, and we can see during inspiration there is a reversal which is above the line, and during expiration there is no reversal. So this is M mode at the mitral left leaflet tips, and we can see there is an additional wave at the level of in the AML, which is the L wave. Okay, so our answers are biatrial enlargement, hypertrophied ventricle, pericardial effusion, strain image with bullseye shows cherry on top appearance, and inspiratory flow reversal, and M mode at which shows L wave. So the diagnosis is restrictive cardiomyopathy, and the cherry on top appearance is specific for amyloidosis. So these are our answers. Now moving on to the clip number 5. Is 30 years old male, which is in cardiogenic shock and is in acute heart failure. Time starts now. So we have 110 participants now.
2 minutes up. Okay. First, moving one by one through the clips, and we can then revise the answers. This is the parasternal long axis view, dilated aortic root, and there is a clearly moving dissection flap, which is going across the aortic valve, and there is incompetent aortic valve. There must be severe AR. So next is this is the abdominal view, and aorta is shown in the the abdominal aorta is shown in the longitudinal axis, and we can see the dissection flap moving across the lumen. Even we can see the dissection flap in the adjacent hepatic artery. And this is the M mode applied at the mitral leaflets, and we can see the premature closure of the mitral leaflet, which is indicative of acute severe aortic regurgitation. So these are the answers: dilated aortic root, dissection flap, incompetent aortic valve, premature mitral valve closure, dissection flap in the abdominal aorta. So this is acute aortic dissection, DBAK1 at least, cardiac surgical repair is indicated urgently in this case. Now moving on to the clip number 6. Is 50 years old male, which is asymptomatic. He is for routine checkup, pre-PPM echo was advised. And questions are, what are the findings? What is the diagnosis? And what is suggested to do to the PPM implanter? Okay, ji, 2 minutes up. Okay, moving one by one through the clips. This is parasternal long axis view, and you can see the dilated coronary sinus just in the AV groove, and the aorta you can see behind the pericardium. So there is dilated coronary sinus, and why it is dilated? Here is the reason. It could be dilated because of the left persistent SVC, which is very important to identify before the pre-BPM checkup, pre-BPM echo, because the implanter must then can change his route of implantation from the left or right, or even Haseeb can put from the left side as well. So here saline study is done, and we can see the saline first enters into the coronary sinus, and then it enters into the RA. So this is confirmatory for the left persistent SVC, because in left persistent SVC, the saline goes to the SVC and then into the coronary sinus and then into the RA.
Otherwise, it should come first in the right atrium. But as it is coming, clearly we can see it is coming from the coronary sinus into the RS. So it is confirmatory for the left persistent SVC. And this finding was identified by our senior registrar doing echo, and he picked it up, and patient was going for the PPM, and this was good. So related coronary sinus, agitated line first appears in the coronary sinus, then in the RA, confirmatory for the left persistent SVC. PPM lead can take the abnormal course if we don't identify this, and if we are not prepared for this, and um, preemptive diagnosis can help us to change our side from the left towards the right side. So this is clip number 7. This is a 40 years old male with shortness of breath and syncope. Questions are diagnosed findings in the images, what is diagnosis, and how will you manage the problem? Time starts now. So we have 123 participants now. मैं ख्याल है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे आ गए, कोई बचा नहीं होगा. थोड़ा सा हम जो है टाइम कम कर लेते हैं क्लिप्स में, 1.5 मिनट में, अगर मेरी सजेशन है तो वी कैन गो थ्रू क्विकली टू कॉल दैट. ठीक है सर, नेक्स्ट क्लिप पे ऐसे कर लेता हूँ. जो पिछला सर स्टेशन था क्लिप 6 में, उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट व्यू वाज यूज्ड फॉर गूगल स्टडी. हाँ एग्जैक्टली, जिसमें आप थोड़ा सा
फोर्थ चैम्बर व्यू को पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे ना, तो उसमें कॉर्नरी साइनस बड़ा अच्छा ओपन हो जाता है। ठीक है। एंटीरियर करेंगे तो एओर्टा, और थोड़ा सा पोस्टीरियर करेंगे तो कॉर्नरी साइनस, वो लॉन्गिट्यूडिनली पूरा ओपन हो जाएगा अक्रॉस द, आपको पूरा नजर आ जाएगा। और इवन पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में भी अगर आप ऐसे लाइन देंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली नजर आएगा कि पहले कॉर्नरी साइनस फिल हुआ है, देन इन द आरवीओटी में ऊपर नजर आएगा आपको। तो दोनों व्यूज से आप कर सकते हैं। ओके सर, टाइम अप। So it is the mode at the mitral leaflets, and the question was male with syncope and shortness of breath. ACG leads are applied to the patient, and we can see in the systole there is anterior motion of this AML, which is in contact with the septum, which looks hypertrophic. So these are all findings: possible hypertrophy, stalling anterior motion of the AML. And this is the late peaking pressure gradient, which is very high, 7.79. 243 is the peak gradient. So M mode mitral valve, systolic anterior motion causing LVOT obstruction, dagger shape late peaking LVOT pressure gradient, diagnosis of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Treatment options are as the patient is having syncope, ICD, myomectomy, alcohol-based ablation for refractory symptoms. So move on to the next clip. This is the clip number 8, which is 19 years old boy presented with palpitations. So questions are findings, diagnosis, and how you manage this case. Time starts now. Okay जी, time up. So the view is parasternal short axis at the great vessel level or the aortic valve level, and from the right coronary sinus we can see there is a gap, and there is a breach, and which is opening into the RVOT just below the, just adjacent to the pulmonary valve. So this is ruptured sinus, right sinus of valva into the RVOT. Here is the slow motion, and you can see the windsock appearance. This is ruptured sinus, and here is the windsock, which is very, this is beautiful windsock in the RVOT. You can see. Here Very is the bookish, very bookish. and this is the CW applied, and you can see the continuous flow from the aorta into the RVOT with pressure gradient around 60. So there is continuous flow or ruptured sinus of vessel valve diagnosis. So it is ruptured sinus into the RVOT, appearance is windsock, continuous pressure gradient, and surgical repair is recommended. This is the question number 9, which is 15 years old boy with exertional shortness of breath and weight loss. The questions are: what are the findings on the echo images? What is the diagnosis?
what blood tests you will advise initially to support your diagnosis, and how will you manage your patient? Time starts now. Okay, जी, time up. Okay, we can see parasternal long axis, apical four-chamber view, and we can see the bilateral enlargement, and then there is obliteration of the apices or distal half of both the RV and the LV. So this is thrombotic obliteration of both the apices, which is very typical and even look is pathognomic for the Loeffler's endocarditis. So our diagnosis is findings are fibrothrombotic obliteration of both the ventricles, bilateral enlargement. So the diagnosis endomyocardial fibroelastosis, possible Loeffler endocarditis. So investigation which can support is eosinophil count. So initial treatment is steroids, anticoagulation, and later on is endocardiectomy or with pericardiectomy. Those are the treatment options. Moving on to the clip number 10, 30 years old male with shortness of breath. What is your diagnosis and how will you manage? Time starts now. Time up. Okay, you can see the findings are this is the modified two-chamber view from the apical side, and we can see the both the mitral valve leaflets are not separating,
and directed towards the one papillary muscle. So it looks like a appearance of a parachute if we see it like in the diastole. So this is again a parachute-like appearance. So there is single papillary muscle in this patient. We can see in the short axis there is only one papillary muscle. You can see on the left side, not visible on the right side. So this is a single papillary muscle, and the diagnosis parachute mitral valve, and then valve replacement is indicated when it is causing mitral stenosis. This is clip number 10. 45-year-old male, asymptomatic, echo done as a pre-op assessment. What is the view, most likely diagnosis, what is the differential diagnosis, and what is the management? Your time starts now. I'm up. Okay, this is transesophageal echo. We can see half clock right here. And this is some heterogeneous mass which is seen in the right atrium, and it has got a stalk here. And it is attached with this stalk. And actually, this patient has some report of some mass in the RA 2 years ago as well. So the patient got operated for this, and it was found to be the right atrial myxoma. So myxoma on the right side. So this is our clip number 11. 55-year-old male diagnosed as chronic liver disease, presented with unexplained dyspnea, referred to cardiologist, to me actually, and for the echocardiography. What are the findings? What is the most likely diagnosis, and what is the management? Your time starts now.
Time up. Okay, this was um, actually I should upload a view with at least 5 cardiac cycles, which I also have. But this 3 cardiac cycle view is uploaded. This is 4 chamber view, and you can see agitated spline studies is being done, and we can see the pacification of the RA and the RV, which looks of normal size. So it rules out any atrial level or pulmonary venous level shunt. So RA and RV are of a normal size. And you can see at least in the 3 cardiac cycles, this line has not even appeared a single speck in the left side. But after the 7th or 8th cycle, this line is completely entering into the LA and LV. So the patient is having a hepatopulmonary shunt or extracardiac shunting, which is responsible for his dyspnea. So this is the arteriovenous shunting at the level of the lungs. So moving on to the clip number 12, it is 18 years old female with hypertension and shortness of breath. Question are, what are the findings? What is the most likely diagnosis and what is the management? Your time starts now. इमेज मैड हो गया थोड़ा सा। मेरा ख्याल है ये कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट आई विल ट्राई टू स्टॉप इट समवेयर। जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं। Time up. Okay, we can see the aortic arch, and this is suprasternal view. In color Doppler interrogation is being done on the descending and arch level, and we can see the flow acceleration or turbulence just beyond the or adjacent to the left subclavian artery. So there is obstruction here. So in the next image, which is MAD image, so in this you can see the sawtooth appearance or diastolic, even the diastolic gradient is present. So there is continuous gradient or diastolic tailing we can see, and there is a high pressure gradient across it, this obstruction. So this is the basically coaptation of aorta, and which is severe. And this is abdominal aorta. We can see the PW here, right here. We can see the abdominal aorta, red color. So indicative of aorta, and the PW applied, and we can see the persistent pressure gradient in the abdominal aorta as well. Sometimes we even don't see the pressure gradients from the suprasternal notch, but the abdominal aorta indicates us that there is some obstruction there, and we will go for the CT scan and find. So this abdominal image is also very important. This is coaptation of aorta. The patient still yet not get operated. She was referred to me and waiting for some like aortoplasty or stenting, but due to the left subclavian artery adjacent to it, still waiting for the to be done something. So see, we have cath images about 10. So can we Okay. like 1 minute or
because the cath images are like one clip only, so not very busy. So Okay, I, so you want for to the take for the time constraint, I am suggesting. okay, so 1 minute only. Okay. Yeah. So that we can quickly go through and all participate. Okay, this Ji, is clip please. number one. 35-year-old female that's implanted. During the procedure, post dilatation done at high pressure, patient suddenly develops the hypotension and collapses. Okay, time starts now. Time up. Okay, we can see the stent. This is the this is the epicranial view, and we can see the stent in the LED, and there is frank coronary artery perforation, very frank. Patient immediately collapses. We some other operator was doing, and we tried to do pericardiocentesis. Unfortunately, we were like unable to do it, and we balloon tamponade it, and we then implanted a cover stent PK papyrus, which sealed it, and luckily patient survived it. तो क्वेश्चंस एक्चुअली बाद में आ गए तो ये इसको स्किप कर लेते हैं क्विकली फाइंडिंग्स और साथ साथ बताते जाते हैं ताकि टाइम जो है सेव हो जाए दिस क्लिप नंबर 2 42-year-old male which was undergoing PCI which has undergone PCI 7 day which was undergoing PCI 7 days after the anterior wall MI after balloon dilatation. This was the finding. ओके सर, क्वेश्चन पहले दिखा दें, फिर उसका क्लिप चलता रहेगा. Okay. ठीक है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर आप अपना एरो थोड़ा साइड पे करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पे एरो. हाँ, थैंक यू. ओके जी, टाइम अप. Okay, this is again epicranial view of the LED, and we can see the flow is very slow, but there is no obvious obstruction or dissection, or so the flow is slow. The finding is no reflow, and we can see the coronary wire, which has been placed in the diagonal branch, not in the LED. So the diagnosis is no reflow. So how you manage it? You give the intracoronary adenosine, verapamil, nitroprusside, even adrenaline. So all drugs like glycoprotein 2b3 inhibitors, and the patient is in hypotension, then you can give noradrenaline, which is very effective. So all the pharmacological vasodilators which can be given. So this is clip number 3.
50 years old male has undergone elective PCI of the LAD about a month ago, presented with anterior wall MI and a possible stent thrombosis. So angio was done. So these are our questions. What are the findings, most likely diagnosis, and the management? This is the clip. The time starts now. Time is up. Okay, this is again epicranial view, and diagnostic catheter is there GL4, and you can see the stent in the proximal to mid LAD, and there is something going out from this stent, and it is most likely, as we have discussed with many persons, it is pseudoaneurysm which is leaking into some cavity. This is pseudoaneurysm of the from the proximal segment and this visible clot. So we implanted two covered stents in this patient, and this pseudoaneurysm all together sealed, and the patient is going well now currently. So it was done in some private center, presented to us with stent thrombosis, and we implanted two covered stent, PK prepares. So actually, we are not finding out the exact neck of this pseudoaneurysm, so we implanted two short covered stents, and this sealed the problem. This is pseudoaneurysm of the cavity. So this is clip number 4, 80-year-old female with senile dementia. Single chamber pacemaker was implanted 10 days ago. Patient presented with syncope. ECG showed again the complete heart block. So the pacemaker malfunction was there. Questions? So what are the findings? What syndrome is it? And what will be the management? So your time starts now. There is a question regarding the previous clip. How to differentiate fistula and pseudoaneurysm? Okay, yes, the pseudoaneurysm, actually, the both are there in this patient. I agree with the question. This is a very good question, and I agree. This is pseudoaneurysm and the secondary leak into the like some space. So first there is pseudoaneurysm formation, and if it is leaking into another chamber, then it is fistula. Time up. So see if you can answer this question. Sir, bilkul. So this is the case of single chamber pacemaker with the right ventricle lead is not at the appropriate position. It has been pulled back. And so there is three types of syndromes which are related to such type of condition. One is the Twiddler syndrome. The second is the Reel syndrome, and the third is the Ratchet syndrome. So I will go for the Reel syndrome in this case, because in Twiddler syndrome, you will have twisting along the other axis, not like this. This is the transverse axis. Yes, exactly. This is like it rotates around it, sagittal.
So Yes, like yes, this. yes. This is real syndrome. If it is the longitudinal axis of the lead, like a rope or a chain, two strings of a rope, like twisting around it, longitudinal axis. So that is basically a twiddler, or actually it basically retracts a retraction of the lead. So this is real syndrome. So we will reimplant the lead or reposition the lead because lead is usually not damaged, I think, in this condition. And this is what we did to this patient. We readjusted the lead again. Patient again presented with real syndrome, second time again. So we have to open the lead again. And this time we have to fix with the like silk, not usually use silk, but done by some other operator. So next question is 24-year-old female, unmarried, presented with inferior wall MI. She had no risk factors for the coronary artery disease. Her echo showed infraposterior akinesia. She was booked for cath on my day, and this was the cath. Question, please. So, what are the findings or in the images? What is the diagnosis and what is the management? The time starts now. Sorry. Time up. Okay, so this is the right coronary artery, and this is the allocranial view, and we can see there is some like linear shadow at the mid-distal junction, which is if we clearly see it looks like something linearly it is basically a case of SCAD, 22 years old female, and no risk factors, and presented with STEMI, and there is a linear shadow in the mid-distal junction. So most likely this is SCAD, spontaneous coronary artery dissection. And unluckily, the lady has a now EF of 35%. She is young lady and now on the medical treatment. So this is the case of SCAD, spontaneous coronary artery dissection, and the management is don't implant a stent in it. It is always managed medically. So don't implant stent unless the patient is really demanding for the stent, like in recurrent angina or very teeny 1 or 2 flow or ongoing ischemia. So don't put a stent. So this So this patient was had the history of pregnancy or something, postpartum or no. okay. SCAD has a very high incidence, about 30% in females presenting with the STEMI, 30%. So we have many patients of SCAD in the last month. Luckily, we all picked all of them. Great, So great, they are all great, medical. So there must be high index of suspicion. great. So clip number 6. This is 60-year-old male, non-ischemic, function class 3 angina. EF is 30%, has undergone cath. What are the questions?
The time starts now. Time up. Okay, this is the right coronary artery is engaged. You can see the awkward position of the catheter, which is a Tiger diagnostic catheter. And when the injection is given, you can see the venous flow or the into some cavity. So it means the previous flow has not yet been cleared. And the artery is totally occluded. Injection is given forcefully, and there is dissection of the coronary cusp, right coronary cusp. So this is aortic cusp dissection. So here we can see the stain because it is less than 4 centimeter height from the aortic cusp. So managed conservatively, and the patient is doing well. So clip number 7. So 28-year-old male with valve replacement presented in heart failure, function class 2. So this is the image. Sorry, from 1 minute. Okay. The time starts now. Most likely questions are typical questions. What are the findings? Most likely diagnosis. Sorry, there was a No problem. So can you show us the questions? yes. Question Okay, so the time is up. G, please. So this is the image of a mechanical bileaflet prosthetic valve, and we can see the leaflets are opening towards the LV. So this is mitral valve, and we can see the one disc is stuck and one hemidisc is moving normally. So this is stuck mechanical mitral prosthesis, and as the patient is symptomatic and in the acute phase, so treatment is thrombolytic therapy initially. So this is the clip number 8, left main PCI done for the ostial left mainstem disease after post dilatation of the left mainstem. So these are our questions. What complication has occurred? What is most likely cause and from apparent from these images, and what is the management? The time starts now.
टाइम अप। तो बेसिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि उसमें कि पीसीआई से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई जा रही है। इसमें गाइडर टिप जो है वो बिल्कुल स्टंट के जो है वो अंदर गई हुई है, लेफ्ट मेन के स्टंट के अंदर। ऑस्टियल प्लेसमेंट के दौरान अगर स्टंट थोड़ा सा लेफ्ट मेन में आ जाए तो गाइडर आपने पीछे रखना है, उसको स्टंट से बचा के रखना है। तो वो स्टंट से बचा के नहीं रखा हुआ, गाइडर टिप स्टंट के अंदर गई हुई है, उसमें इंसर्ट हुई हुई है। और अगर हम नेक्स्ट इमेज पे आए तो आपको उसमें स्टंट फ्रैक्चर नजर आ रहा है, इस लेवल पे। इससे नेक्स्ट ये बिल्कुल जहाँ पे बलून रखा गया, तो उसमें स्टंट फ्रैक्चर है बेसिकली। तो आगे इससे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइप ऑफ, ये हियर यू कैन सी द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्टंट। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टंट फ्रैक्चर डिफिकल्ट इमेजेस में भी आ सकता है कि ये स्टंट फ्रैक्चर है लेफ्ट में। इनका कॉजेज ये थे कि गाइडर टिप जो थी, गाइडर टिप इंड्यूस फ्रैक्चर है स्टंट का। तो दिस वाज द कॉज। और एक और हमने फिर स्टंट डाल दिया था इसके अंदर, उसके बाद आईवस किया था, तो अच्छा पोजीशन हुआ था इसका। आईवस के इमेजेस उसमें नहीं आए हमारे उसमें ऑनलाइन सिस्टम में, वरना वो हम साथ दिखाते थे। व्हाट कॉम्प्लिकेशन हैज अकर्ड, सो इट इज स्टंट फ्रैक्चर। व्हाट इज द कॉज, गाइडर टिप इंड्यूस, मैनेजमेंट, पुट अनदर स्टंट। क्लिप नंबर 9, 50-year-old female presented with non-ST elevation MI. She has undergone PCI of the LAD about 3 months ago and now in STEMI. What are the questions? What are the findings, what is the diagnosis, and what is management? The time starts now. Time up. Okay, first is the view. It is again epicranial view of the LAD, and two findings are there. Many findings actually. The two there is a stent in the proximal LA to proximal LAD, and there are two main findings. One is there is a stenosis at the distal edge of the stent, which is within the 5 mm of the stent. So this is the in segment ISR. Which has developed 3 months. Another thing is there is some staining outside the stem adjacent to the artery. So this is again a pseudoaneurysm. So one is pseudoaneurysm from the proximal aspect, and the other is ISR, instant restenosis. So there are two findings in this patient. So how will you manage this case? This was very tricky, discussed among all of us and with other senior colleagues, and it was decided not to put a cover stand or not to put another stand. This lady has undergone cabbage about 3 weeks ago, and she is doing well now. So coronary artery bypass surgery, because there is pseudoaneurysm and there is a ISR. So if we put another stent across a lens, there is a high chance that if we put a covered stent and another stent, so there are 3 stents within a stent. So very complicated. So it is cabbage. Cabbage is done in Haseeb in your hospital. 2 weeks, I think 2-3 weeks ago. Okay. Dr. Yasser did this. Dr. Haseeb. Okay. So this is pseudoaneurysm and ISR. Very So nice clip case. number 10. This is the 45 male angina function class 3, normal EF on the echo. So what are the findings? What is the donor artery for the occluded vessel? तो क्लू भी है कि कोई आर्टरी occluded है, तो बाद में क्वेश्चन में क्लू भी हो जाता है कि वो आंसर क्या है. So what treatment would you suggest?
Okay, so your time starts now. एक्चुअली ये मैं ही करा था इसका एंजियोग्राम, और उसमें ये था कि लेट्स सी। Time up. Okay, so this was the first image. There is uploaded LED from the proximal mid segment, and we can see this total occlusion of the LED and from the hair, and this faintly filling from it's the same collateral, same side collateral, and also there is some filling of the this RCA. So retrograde filling of RCA. So next image is the LV autogram, which is done when LED is occluded. We usually do it. So see how is the LV. So LV is good. It means the LED is getting supply from somewhere. So when I did the RCA, I didn't find any LED. Then I asked to my PG who was assisting me, Conus must be supplying this LED because LV is very good. So we purposefully, you can see the catheter movement. We purposefully engage the conus Yes. branch, and we find the LED is fully filling, and that's why the LV is reserved. So the conus artery is filling the LED. The patient has undergone CABG now. It's like a few months ago. So this is the importance of the conus branch when the LV is normal and the LED is totally occluded. So Very these are nice. the two. So thank you all, and many prayers for your success. And thank you, Haseeb. Thank you so much, sir. It was a wonderful talk session. और अभी 7 सेशंस जो है ना वो डॉक्टर मदीहा के और 7 सेशंस मेरे रहते हैं, लेकिन जो आपने 20 सेशंस करवा दिए हैं, इट वाज वेरी वेरी रेयर फाइंडिंग्स और वेरी टिपिकल फाइंडिंग्स, नीट एंड क्लीन इमेजेस। आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को ना सिर्फ एग्जाम के लिए इसका फ़ायदा हो, बल्कि आने वाली लाइफ के अंदर जब भी उनकी स्पेशलिटी में जाएंगे, क्योंकि पेशेंट के पास कोई सीडी लेकर आएगा देखने के लिए, तो ये इमेजेस उनको रिकॉल करवाएं और किसी पेशेंट का कोई फ़ायदा हो जाए आपके थ्रू। सेकेंडली सर, आई नो सुबह आपने राउंड पे जाना है, सो आई थिंक इफ यू वांट टू गो यू कैन लीव द सेशन, और कोई मैसेज देते हुए अगर आप जाना चाहेंगे तो सबका फायदा हो जाएगा। और वी हैव स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप बाय द नेम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ टुमारो पाकिस्तान, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि FCPS MD कार्डियोलॉजी को तो हम फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ जो हमारे इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं और उनकी जो अवेयरनेस है जो कि बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं है, कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कॉस्ट क्या है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में उनको गाइड करने की कोशिश करें, बोथ अमेरिकन एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। तो 2 कमेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए और 2 कमेंट्स जो है ना वो इस जो इनिशिएटिव लिया सर उसके लिए आपकी तरफ से जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स के लिए तो ये है कि अब वो जो ये टॉक्स है और जिसमें एको एनजीओ और ये अभी डॉक्टर मदिहा आप और दिखाएंगे बाकी चीजें सर स्पेक्स शेयरिंग से ऑफ कर रिलेटेड। दीजिएगा, शेयरिंग जी ऑफ जी, कर तो दीजिएगा। उसमें ये है कि वो आप टॉक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टॉक्स को पास करना, सिर्फ टॉक्स को प्रिडिक्ट करना है बस, मेरे ख्याल में तो। यानी कि आप ईसीजीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ईसीजीज हैं जो हमने तैयारी करी है, 50 ईसीजीज की लिस्ट है या 70 ईसीजीज की लिस्ट है। और एको को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनजीओ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जो फाइंडिंग जो क्लिप पे चीज दिखाई जा रही है वो आपने पहले देखी भी हो, ये जरूरी नहीं है, ना देखी भी हो। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं तो आपका आंसर क्लोज टू द दैट वन होगा इमेज के, तो आप इंशाल्लाह पे उसमें मार्क्स आपके अच्छे ही होंगे। तो अगर आपने अपने सारे इमेजेस की सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जैसे एको में एम मोड और CW PW की,
तो आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रेशर ग्रेडियंट है या ये एबनॉर्मल फाइंडिंग आ रहा है, तो आपके मार्क्स गेन करेंगे। तो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और देखने का फायदा ये है कि आपने चीज़ पहले वो क्लिप ना भी देखा हुआ हो, तो आपका आंसर क्लोज टू द करेक्ट आंसर हो सकता है और आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे। तो ये है कि उसमें ये एग्जामिनर अब जैसे रिटर्न पास हो जाता है तो सब लोगों की कोशिश होती है किसी तरह बस टॉक्स पास कर लें। तो ये तो ये सही भी है, आप क्या कह सकते हैं उसमें, जैसे फॉर्मेट चल रहा है आजकल। तो ये है कि टॉक्स पास कर लें, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो टॉक्स की फिर ज़्यादा मतलब 60-70% टॉक्स की तैयारी करें फिर, और थोड़ा सा पहले टाइम में फिर शॉर्ट लॉन्ग केस की करें। बाकी फोरम अच्छा है आपका, दूसरा मेरा जी जी सी। So you think the passing percentage has increased since your times? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे तो अब ये देखिए ना, अब तो 10 ईयर से हो गया है तकरीबन। तो हम लोग तो इसमें ये था कि इतना मटेरियल और चीज़ें नहीं थी, उससे मेहनत ज़्यादा होती थी। अब सपोर्ट बहुत है और खुद से मेहनत, शायद वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल जाए ना, वो कहते हैं ना कि तो फिर वो मेहनत थोड़ी उसमें फिर वो हो जाती है हम शायद। लेकिन एक अभी लोग काफ़ी चीज़ें अवेलेबल। And what about the international examination certifications? Should we do it? हरसीब, Should we not do it? मैंने भी ये नेशनल एको बोर्ड किया हुआ है। इसका फायदा तो ये होता है, आपकी एक बेसिक उस लेवल की सर्टिफिकेशन हो जाती है। जैसे जैसे एको बोर्ड है ना, आप एको एको बोर्ड की तैयारी के दौरान आप एको को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, और जो आपकी जो डेफिशिएंसीज होती है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग सीनियर रजिस्ट्रारशिप, वो आपकी काफी हद तक उस तैयारी के दौरान खत्म हो जाती है। एक्सपेंसिव तो होते हैं। वैको बोर्ड जो है वो तकरीबन $1,000 का है, $1,000 में। तो उसकी अच्छी खासी तैयारी है, अगर आप सही तैयारी करें तो आप वो जितने भी एको की डेफिशिएंसीज है ना, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन है और जो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं एको के, बहुत उसमें डिटेल है, वो सारी आपको जो है ना, अगर आप अच्छी तैयारी करें तो उससे गो थ्रू हो जाते हैं। यानी आपने अपना टीचर खुद ही बनना होता है उसमें। तो वो आपकी अपनी एक सर्टिफिकेशन भी है कि मेरी अपनी सर्टिफिकेशन है मेरी नॉलेज की, और मेरी फिर मेरी पेशेंट केयर में वो आएगी नॉलेज। जाहिर बात है पेशेंट केयर इन्हांस होगी, तो वो जो है वो आपकी अपनी सर्टिफिकेशन हो जाती है, और रिकग्निशन है बस इसमें, ये मेरा ख्याल फायदा होता है उसमें ज़्यादा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। Sir, again, thank you so much. If नहीं, you can continue, it will be honor for us. If you want to go, I know, I understand, सुबह आपने राउंड करने और सारे देखने होते हैं, तो चलिए आप कैरी ऑन करें, मैं आता जाता रहूंगा, मैं जरा अपने हाँ, मोबाइल से श्योर, आप लोगों के साथ रहता हूँ, ठीक है ना? sure, sure, चलिए। sure, sir, sure, sir. Okay. So thank you so much again. With this, I will move towards our second speaker, and I will request Dr. Madiha to take over and share her PowerPoint presentation. Assalamu alaikum everyone. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me as a speaker. And I'm very glad to be here with my teachers. आपके साथ और डॉक्टर नुमान के साथ आप लोगों की प्रेजेंटेशन देख के हमने एग्जाम पास किया है। एक मिनट में okay, let me share my presentation. Sure, please. शो हो रही है अभी आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी शो नहीं हो रही है। हाँ जी, अब शो होना शुरू हुई है। Yes, now we can see. Now we can see. ओके, तो डॉक्टर नुमान ने काफ़ी ज़बरदस्त एको की और जो हमारी एंजियोग्राफी की थी, एंजियोग्राम्स जो थे बड़े ज़बरदस्त डिटेल में उन्होंने बता दिए हैं। तो हम मेरे पास जो आपके पास आपके लिए स्टेशंस हैं, वो जो हमारा मिसलिनियस का सेशन होता है जिसमें हमारे स्टैटिक स्टेशंस होते हैं, तो वो मेरे पास हैं यहाँ पर कुछ 7 स्टेशंस अराउंड। मैं वो आपसे शेयर करती हूँ, और टाइम हम वही रखते हैं 1 मिनट, मेरे ख्याल से काफ़ी बिल्कुल, रहेगा। उसके लिए बिल्कुल ठीक बाकी है, उसको फिर वो कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो here is the first station. So this is a 55-year-old female presented with a chest pain and breathlessness for 2 days. This is your static station, and the questions are: what is the modality? Write the important findings. What is the likely diagnosis, and what is the in-hospital mortality rate? So your time starts now. Modality, findings, diagnosis, and mortality rate.
Time up. So now you can check your answers with the key. So what is the modality? So it's cardiac CMR, axial view, and the four-chamber view at the level of the heart. What are the findings? The dyskinesia of the mid and the distal LV segment, it is appreciated in the systolic window, hyperkinetic basal segment, octopus spot-shaped LV, and the bilateral pleural effusion. What is the likely diagnosis? So the Takotsubo or stress cardiomyopathy is the diagnosis. And what is the in-hospital mortality rate? So it's 2 to 7% around. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये पेशेंट मोडेलिटी के लिए आपको जो कैचिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसको देख के बाज़ औक़ात हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीटी स्कैन है या सीएमआर है. तो उसकी जो कैचिंग फाइंडिंग होती है वो ये होती है कि आपका जो सीटी स्कैन होता है उसमें जो आपकी बोन्स होती हैं वो आपको वाइट नजर आती है, और जिसे आप हाइपरडेंस कहते हैं. और जो आपका सीएमआर होता है उसके अंदर आपका फैट एंड फ्लूइड, ये दोनों चीज़ें ये आपको वाइट नजर आती है. तो इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लड है, ब्लड के साथ आपको ये सारे, इसमें कंट्रास्ट नहीं होता, ये ब्लड है और ये आपको जो सारा नजर आ रहा है ये लिक्विड या फ्लूइड जिसे आप कहते हैं वो आपको वाइट नजर आ रहा है. उसके अलावा यहाँ अगर देखें तो ये आपको प्लूरल इफ्यूजन नजर आ रही है. ठीक है, तो ये दो आपको इमेजेस देने का मकसद ये होता है कि एक आपको साइकिल का एक फेज दिया हुआ है और दूसरा फेज दिया हुआ है, या फिर गैडोलिनियम अगर दिया हुआ है तो उसमें आपका एक विदाउट लेट फिल्म और अर्ली फिल्म इस तरह करके उन्होंने दिए होते हैं. तो अगर इस तरह आपको दो फेजेस दिए हुए हैं किसी कार्डियक साइकिल के, तो आपने सोचना ही है कि इसके अंदर क्या ही दिया हुआ होगा. ठीक है, अब अगर इस फर्स्ट वाली पिक्चर को आप देखें तो इसके अंदर आपको दिस इज LA, दिस इज LV, इसके बीच में ये माइट्रल वेल्व है. बाज़ औक़ात जो आपको इमेजेस दी जाती है उसके अंदर आपको माइट्रल वेल्व के ये लीफलेट्स खुले हुए नजर आते हैं. तो आप क्लियरली इसमें पिक कर सकते हैं कि ये आपका डायस्टोलिक फेज है, क्योंकि डायस्टोलिक फिलिंग LA टू LV होती है आपकी. ब्लड की फिलिंग जो होती है वो डायस्टली के अंदर होती है. ठीक है, और ये आपका सिस्टोलिक फेज है. अब सिस्टोलिक फेज में अगर आप देखें तो ये आपको जो LV की मिडिल पार्ट और जो आपका LV की एपेक्स एपाइकल पार्ट्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली जब सिस्टली होती है तो इनवर्ड होती है, मगर इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास आउटवर्ड है. तो आप इसे अकाइनेटिक या डिसकाइनेटिक कह सकते हैं. जबकि जो बेजल सेगमेंट्स हैं उसकी आप अगर देखें सिस्टली के अंदर वो आपकी हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हुए हुए हैं या हाइपर काइनेटिक जिसे आप कहते हैं, तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन अंदर की साइड पर यहाँ पे आपको सिस्टली के अंदर दिख रही है. ठीक है, और ये आपका डायस्टोलिक फेज है. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी हम ये तो देख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम इस तरह की फाइंडिंग्स जो रेलिवेंट फाइंडिंग होती है या अदर देन द फोकस्ड विंडो फाइंडिंग होती है वो हम मिस कर देते हैं. तो उसके अंदर आपने ये जो प्लूरल इफ्यूजन है वो मिस नहीं करनी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो इसके अंदर आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन के अंदर इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी पूछी हुई है, इसके आपका रिकरेंस रेट पूछा जा सकता है. वो 1.5 टू 2.9 होता है यंगर फीमेल, मिडिल एजेड फीमेल्स के अंदर होता है. कुछ क्वेश्चन कुछ जो है आपको आंसर का क्लू आपको क्वेश्चन से भी मिल सकता है. जैसे कि इसमें अगर मैं बता देती कि ये स्ट्रेस हुआ कोई इमोशनल या फिजिकल और उसके बाद पेशेंट ने आपके साथ प्रेजेंट किया है, या नॉर्मल कोरोनरीज का बता देते तो वो और क्लियर हो जाता. मैंने इसमें खुद से नहीं रखा था, मगर वहां पर हो सकता है आपको ये क्लू दिया हुआ हो. तो जो स्टेम होता है उसको गौर से देखना है. ठीक है, अच्छा. नाउ दिस इज स्टेशन नंबर 2. So this is a CAT data of a middle-aged male, which is who is a lung cancer survivor, and he presented with worsening breathlessness. The questions are: what are the CAT findings and the diagnosis? So your time starts now. CAT findings आपने बतानी है और उससे आपके diagnosis बताने हैं.
I'm up. Okay. Okay, so CAT findings are there is increase in right and left atrial pressures, and they are both are equal, and the increased and equal right and left ventricular and diastolic pressure. And the other finding is that the RV systolic pressures are less than 55. Why this is important? Okay, so the diagnosis is constrictive pericarditis here. अच्छा, अब ये इस कैट डेटा में जो याद रखने वाली चीज है वो आपके की नंबर्स हैं, की नंबर्स फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड की नंबर्स फॉर प्रेशर्स। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए बस दो नंबर याद आपने रखने, एक 7 और एक 5। whenever there is a step up of oxygen in the chambers from SVC or IVC to RA, the number is 7. तो 7 और more than 7 step up saturation आपको मिले तो वो आपकी, इसका मतलब है कि वहां पे कोई शंट है, वहां पे कहीं ऑक्सीजनेशन हो रही है, कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ठीक है। अगर बाकी सारे चैम्बर्स के अंदर आपका जो नंबर है वो 5 है। दूसरी चीज, वी हैव टू रिमेंबर दीज नॉर्मल कार्डिक चैम्बर प्रेशर्स। जो राइट साइडेड हमारे प्रेशर्स होते हैं वो यूजुअली लोअर साइड पर होते हैं, एंड द लेफ्ट साइडेड प्रेशर्स आर यूजुअली ऑन द हायर साइड, बट द डायस्टोलिक प्रेशर्स ऑफ द लेफ्ट साइड आर ऑल्सो एट द लोअर साइड। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट एट्रियम लेस देन 5 होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम देखें तो वो लेस देन 12 होता है, राइट वेंट्रिकल भी लेस देन 5 होता है। इसको याद ऐसे रखें कि राइट साइड के तकरीबन एट्रिया और वेंट्रिकल का लेस देन 5 होगा। आर्टरी में जाके 10 का आपके पास होता है, और बाकी जो लेफ्ट साइड के आपके प्रेशर्स हैं वो एट्रिया में लेस देन 10 और एलवी के अंदर भी लेस देन 10, ऑलमोस्ट इक्वल इस तरह होते हैं, ठीक है। अब आपने जब इसको सॉल्व करना है तो ये देखना है, पहले आप सेचुरेशन देख लें, कुछ चीजें तो आपको वही बात स्टेम से क्लू मिल जाएगा। फिर आपने सबसे पहले सेचुरेशन को देख लेना है कि यहाँ पे कहीं पर आपको एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, कहीं स्टेप अप मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो आप शंट सोचेंगे, अगर वो नहीं मिल रहा तो आप शंट के अलावा दूसरी चीजें सोचेंगे, जैसे कि इस केस में था सीपीसी। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अलावा इसी तरह का कैट डेटा आपको मिल सकता है। दो डिफरेंशियल्स और हो सकते हैं, कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, और दूसरी चीज आपको मिल सकती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन तीनों के अंदर आपके पास जो डायस्टोलिक प्रेशर्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, आर ए एल ए आर वी एल वी। और वो इक्वलाइजेशन का मतलब होता है विद इन 5 मिलीमीटर के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप आर ए एल ए देखें तो 1 का डिफरेंस है, आर ए आरवी के अंदर देखें तो 2 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 5 तक का होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, टेम्पोनार्ड को आप सिर्फ इससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, वो आपको क्लू पिक करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाता है तो वो आपको क्लू पिक करना पड़ेगा स्टेम से। अब जैसे इसमें लंग कैंसर सर्वाइवर इन्होंने दिया हुआ है, तो मीडियास्टिनल रेडिएशन हुई होंगी, तो हमारा जो ज़्यादातर ध्यान जाएगा वो जाएगा कि इसको कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अगर आप रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी से आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें आरवी के सिस्टोलिक प्रेशर देखते होते हैं, क्योंकि ये एक इन दोनों को डिफरेंस आप लोगों ने जो याद किया होगा उसमें था कि आरवी सिस्टोलिक प्रेशर इफ लेस देन 55 देन इट्स more consistent with the constrictive pericarditis, और अगर आरवी के सिस्टोलिक प्रेशर आर मोर देन 55 तो वो आपके डायस्टोलिक प्रेशर तो वो आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की तरफ जाता है। तो इस डिफरेंस को देखते हुए आपने ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग भी इसमें बताई कि आरवी सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो लेस देन 55 है, इसलिए मेरा डायग्नोसिस कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह का सिनेरियो अगर हो तो उसमें ये इस फाइंडिंग के अलग अलग से मार्क्स हो सकता है ज्यादा मार्क्स के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेशन। So this is middle-aged male presented with breathlessness for the last 2 weeks. Findings are, what are the key chest X-ray findings? Question, what are the key chest X-ray finding and the landmark trials for the device shown in this image? The time starts now.
टाइम अप। ओके, तो मेरे ख्याल से चेस्ट एक्सरे तो सबने सही पहचान लिया होगा। सर, डॉक्टर हसीब की बुक सबने पढ़ी होगी टोक्स की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, इसके अंदर ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या है। सो वही, आप पहले तो कार्डिक जो साइज है या चैम्बर्स है उनके ऊपर आप कमेंट करते होते हैं। सो नंबर 1 इज द इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो विद द एलवी टाइप एपेक्स, and there is a dilated right descending pulmonary artery. Then we will comment on the lung vasculature. So there's an upper lobe diversion of the pulmonary venous vasculature. Fourth important finding is the CRTD device with a displaced RV lead into the hepatic vein by the IVC. Likely diagnosis is this. And the sternotomy wires are also there. What are the landmark trials for the CRTD? So these are CARE HF, MEDIT CRT, and the companion trials with the positive results, जिनमें मतलब mortality benefit दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो आपने ये देखना है कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं कौन सा एक्सरे के अंदर कहाँ पे दिखता है। तो आपका जो राइट बॉर्डर होता है वो आपका राइट एट्रियम बनाता है, लेफ्ट बॉर्डर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। दिस इज द मेन पल्मोनरी ट्रक विच इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड द लेफ्ट, एंड यहाँ पर आपको राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी मिलती है जो कि अक्सर हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर डायलेटेड मिलती है। बाकी एओर्टा, एओर्टिक नकल और ये सारी चीजें तो पिक कर ली जाती है इजीली, सिर्फ हार्ट के बॉर्डर्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इस एक्सरे के अंदर अगर स्टेनोटमी वायर्स किसी को नहीं नजर आए तो ये हमें पीछे नजर आ रहे हैं स्टेनोटमी वायर्स। ठीक है। दूसरी चीज हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है कि आपका डिवाइस कौन सा है। तो डिवाइस में दो चीज़ें आप देखें, एक तो आप ये जो जनरेटर है इसका साइज आपको थोड़ा सा क्लू देता है। जो बड़ा जनरेटर होता है, बड़ा साइज होता है, वो यूजुअली डिफिब्रिलेटर होता है। तो क्योंकि वो हाई एनर्जी डिवाइस है तो वो डिफिब्रिलेटर का आपको जनरेटर ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है। पेसमेकर का साइज इसके मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है। दूसरी चीज आपने देखना है कि यहाँ पर आपकी पेसमेकर से लीड्स कितनी निकल रही हैं, 1 2 3, ये हमें यहाँ पे पता चल रही है। अब ये 3 लीड्स हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर लैंड कर रही होंगी, वो हमें लैंडिंग जोन देखने हैं इनके। तो अगर आप देखें तो ये एक लीड यहाँ पर आकर यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर टर्न हो गई है। दूसरी लीड जिसको यहाँ पर आकर एक बैलरिना फुट अपेयरेंस करके और यहाँ पे आरवी के अंदर लैंड करना चाहिए था, वो वहां पर नहीं है। तो मतलब ये लीड यहाँ से डिसलॉज हो गई है और डिसलॉज होकर ये हमारे पास ये यहाँ पर आ रही है और ये जाकर यहाँ पे लैंड कर रही है। अच्छा, अब हमारा जो लीड्स होती हैं वो एसवीसी से आती हैं। एसवीसी से लीड आएंगी आरए के अंदर आएंगी, ये आरए के आपको नजर आ रहा है। और आरए के साथ जो नीचे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो आपका आईवीसी होता है। तो इस वजह से हमें इसका हमें अंदाजा हुआ कि ये आईवीसी से होते हुए जा रही है और जाकर ये आईवीसी जो है वो हमारा हमारा हेपेटिक वेन के अंदर जाता होता है। तो ये जो लीड थी आरवी की वो डिसलॉज होकर बेसिकली आरवी के अंदर चली, हेपेटिक वेन के अंदर चली गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये सीआरटीपी क्यों नहीं है, सीआरटीडी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर एक कॉइल नजर आ रहा है जो आपका शॉकिंग कॉइल होता है, वो शॉकिंग कॉइल आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। तीसरी लीड अगर आप देखें यहाँ पर बहुत ही बारीक से आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये जाकर ये कोरोनरी साइनस के अंदर लैंड करती है जो कि एक थिन लीड होती है जिसके ऊपर यहाँ पे हमारे पोल्स बने हुए होते हैं इस तरह। तो डिवाइस आपने इसे पहचान लिया और डिवाइस की अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दी हुई है तो वो आपने इसके अंदर पहचान लिया। ठीक है सर, आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप साथ में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये नहीं आपकी नहीं, स्पेशलिटी है। हाँ थैंक यू, लेकिन इट इज सफिशिएंट, बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन हो गई। लैंडमार्क ट्रायल्स आई थिंक रह गए। हाँ जी सर, वो केयर एचएफ ट्रायल, मेडिट सीआरटी एंड कंपेनियन, ये पॉजिटिव ट्रायल्स थे जिनमें मॉर्टेलिटी बेनिफिट देखा गया था। ठीक है, मूविंग टू द स्टेशन नंबर 4। So this is a middle-aged male who develops severe breathlessness with hypotension. And the questions are: what are the key chest X-ray findings? What is the diagnosis? And what would be the next immediate step? Time starts now.
Time up. Okay. So what are the findings? So we can clearly see that there is a hyperinflated lung fields with a low set diaphragm. जो हमारे एम्फाइसेमेटस या COPD इन पेशेंट्स होते हैं उनका हमें इस तरह क्लियर फर्स्ट लुक में ही हमें लगता है कि ये हाइपरइन्फ्लेटेड है, बट आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिब्स. तो अगर एंटीरियर रिब्स आपकी मोर देन 6 है और पोस्टीरियर रिब्स आपकी मोर देन 10 और मोर देन 10 नजर आ रही हैं, तो वो आपके हाइपरइन्फ्लेटेड लंग्स फील हो जाते हैं. वर्टिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट, अब इसमें हार्ट के कोई चैम्बर्स इनलार्जमेंट हमें नहीं नजर आ रही, लेकिन हमने हार्ट के ऊपर कमेंट कर दिया कि इस चेस्ट एक्सरे में हार्ट जो है वो वर्टिकली पोजीशन है. फिर उसके बाद आप डिवाइस बता दें या लंग मार्किंग्स बता दें. जैसा आपको वो डुअल चैम्बर पेसमेकर इसके अंदर लगा हुआ है, इसमें अगर आप ये बता दें कि लेफ्ट अप्रोच से राइट अप्रोच से लगा हुआ है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होगी. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ. दूसरी चीज जो लंग्स के आपके कमेंट करना है वो आप देखें. इसमें देयर आर एब्सेंट लंग वेस्कुलर मार्किंग्स over the whole right hemithorax, and there is a collapsed right lung with a margin, इसके borders आपको clearly उसमें नजर आ रहे हैं. So the diagnosis is right-sided tension pneumothorax, and the immediate next step would be the needle compression. तो वो आप अगर टाइम है तो आप पूरा डिटेल लिख दें. टाइम नहीं है ये सब लिखने के बाद तो जस्ट निडल कंप्रेशन भी मेरे ख्याल से काफी होगा, क्योंकि इमीडिएट स्टेप पूछा उन्होंने, उसका तरीका नहीं पूछा. तो उसका वो आपको पता होना चाहिए जरूर. अगर उन्होंने इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाकर डाल दिया कि हम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में विद 14 गॉज कैनुला जो कि लार्जेस्ट अवेलेबल हो आपके पास, और मिड क्लेविकुलर लाइन में और जस्ट अबव द रिप, क्योंकि वहाँ पे आपके वेसल्स मौजूद नहीं होते, तो वो आप करते हैं. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक बात याद रखने की ये है कि अगर ऐसा कोई एक्सरे आपके पास हो जिसमें डिवाइस आपका राइट साइड के ऊपर इम्प्लांटेड नजर आए, एक तो ये कि लास्ट वाले एक्सरे से आप पहले कंपेयर करो तो जनरेटर का साइज आप देखें इसमें छोटा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि दिस स्मॉल साइज डिवाइस इज द पेसमेकर नॉट द डिफिब्रिलेटर. दूसरा, यहाँ पर आप देखें तो 2 नॉब्स नजर आ रही है, इसमें से 2 लीड्स निकल रही है, तो 2 लीड्स हैं तो डुअल चैम्बर पेसमेकर होगा. कोई हमें शॉकिंग कॉइल इसके अंदर नजर नहीं आ रहा. आप देखें तो ये एक लीड आकर यहाँ पे रेस्ट कर रही है RA के अंदर, और ये एक लीड नीचे जाकर RV के अंदर रेस्ट कर रही है. जो राइट लंग की फील्ड्स अगर आप देखें तो ये हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स और लंग वेस्कुलर मार्किंग आपको यहाँ कहीं नहीं नजर आ रहे, और ये आपको मार्जिन नजर आ रहा है पूरा कोलैप्स लंग का. ठीक है. जो राइट साइड पे डिवाइस अगर लगा हुआ है तो आपने एक चीज पे और गौर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसको डिवाइस री इम्प्लांट राइट साइड पे हुआ, यूजुअली लेफ्ट साइड पर होता है. तो ऐसा तो नहीं है कोई मैं यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड लीड मिस कर जाऊँ अपनी फाइंडिंग के अंदर. तो वो एक दफा इस केस में नहीं है, इसका राइट साइड पे क्यों हुआ वो तो मुझे नहीं पता, मगर अगर कोई इस तरह का डिवाइस हो तो उसमें जरा गौर अनएक्सपेक्टेड लीड्स पे कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह की फाइंडिंग है तो वो मिस ना हो और हमारा कोई मार्क जो है वो लूज ना हो वहाँ पर. ठीक है. स्टेशन नंबर 5. So this is the ECG of a 75-year-old patient who presented with a syncope. Time start. Questions? ECG findings, next best step, and is this a patient a candidate for permanent pacemaker? Okay, time starts now. ठीक है, फाइंडिंग्स बतानी है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, और परमानेंट पेसमेकर इस पेशेंट को आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंकोपी के साथ प्रेजेंट हुआ है. Time up. ओके. तो फाइंडिंग्स अगर आप इसमें देखें तो रेट आपको अप्रोक्सीमेटली 60 में की पहले शो कर देती हूँ ताकि आप मैच कर लें जिसने अपने पास राइट डाउन किए. साइनस रिदम पे कमेंट करना है. साइनस है, साइनस नहीं है, पी वेव आपको 1 AVL में अपराइट नहीं मिल रही. अगर रेट 60 बीट्स अप्रोक्सीमेटली
there's a left axis deviation, and there's a right bundle branch block, there's a left anterior fascicular block. What would be the next step? We will go for EP study. And if in EP study we found there's a HV interval of more than 70 millisecond, then this patient is who presented with syncope is a candidate for permanent pacemaker. अच्छा, इसमें एक नेमोनिक मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी याद रखने में कि ब्लॉक के अंदर कौन से डेविएशन के साथ कौन सा फेसिकल ब्लॉक होता है, और वीटी के अंदर ऑपोजिट हो जाता है ना। तो ये मैंने एक चीज, आप लोग भी यही कीजिए कि एक चीज याद रख लीजिए और उसके बाद फिर फर्दर अगली चीज आप उसको रिलेट करके अपनी फाइंडिंग कंफर्म कर सकते हैं। तो राइट बंडल ब्रांच के साथ अगर आपको द नेमोनिक इज PR is abnormal in blocks, ठीक है। तो PR is abnormal in blocks मैंने ये याद रखा था। P is for posterior fascicle and right is for right axis deviation। तो blocks के अंदर अगर आपके पास कभी भी right axis deviation है with RBB है आपके पास बंडल ब्रांच ब्लॉक, दूसरा आपके पास आपको लगता है कि right axis deviation है, तो वो posterior fascicular block, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आपको लेफ्ट एक्सिस राइट एक्सिस डेविएशन मिल रही है, नहीं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल रही है, तो एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लॉक्स के अंदर होता है। लेकिन जब आप वीटी की बात करते हैं, वीटी के अंदर टैकीकार्डिया में जब आप देखते होते हैं कहते हैं ये कौन सा फेसिकुलर वीटी की आपके पास जब ईसीजी आती है और आपसे ये पूछा जाता है ओरिजिन कहाँ से है, कौन से फेसिकल से है, तो वो इसका उल्टा होता है। उसमें अगर आपके पास राइट एक्सिस डेविएशन होती है तो वो आपका एंटीरियर से ओरिजिनेशन होता है, और अगर आपका लेफ्ट एक्सिस होता है तो वो आपका पोस्टीरियर से होता है। तो ये अगर याद कर लेंगे तो आपको ये 4 ECGs में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1:1 कंडक्शन है। ये पेशेंट है 75 ईयर ओल्ड सिंकपी के साथ आपके साथ प्रेजेंट किया है, मगर इसकी 1:1 कंडक्शन है, कोई और ब्लॉक नहीं है। जिससे आप बायफेसिकुलर के बाद ट्राइफेसिकुलर या इनकम्प्लीट ट्राइफेसिकुलर ये टर्म्स यूज करते थे, वो अब यूज नहीं होती। उसका रीजन ये है कि अगर आप ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक कह देंगे तो इसका मतलब उसका राइट बंडल भी गया हुआ है, एंटीरियर फेसिकल भी गया हुआ है, पोस्टीरियर फेसिकल, तो उसका तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसीलिए वो टर्म मिसनोमर है, वो हम अब यूज नहीं करते। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने कोई इस तरह का PR प्रोलॉन्ग, कोई 2:1 ब्लॉक, कुछ इस तरह की चीज आपको नहीं मिल रही, तो अब इसमें सोचना पड़ेगा कि हमने पेसमेकर पेशेंट को लगाना भी है या नहीं। तो ये सिंकपी ओल्ड एज है, हो सकता है वेजोवेगल हो। हम कंफर्म ऐसे करेंगे कि ये इसका EP स्टडी करेंगे, उसमें HV इंटरवल देखा जाता है। ये एल्गोरिदम आपको ब्रेडिकार्डिया की गाइडलाइंस में AHA मिल जाएगा। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपका 1:1 कंडक्शन है विद नॉर्मल PR, उसमें कोई और ब्लॉक नहीं है, तो फेसिकुलर ब्लॉक हो, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, उसमें आपने देखना है पेशेंट सिंकपी के साथ आया है तो आपने उसका HV इंटरवल मॉनिटर करना है, मेजर करना है। वो अगर मोर देन 70 है तो आपने परमानेंट पेसमेकर उसको लगा देना, ठीक है। अच्छा, स्टेशन नंबर 6. So this image is from middle-aged female patients who present with the breathlessness for last 4 years. So what are the findings? What is the most likely diagnosis? Okay, the time starts now. It is breathless for 4 hours. वो आप For गलती से 4 4 years बोल गए. अच्छा, Okay, the time has been started. Time up. So is this a CT scan or is this a CMR? तो अब ये हमने लास्ट स्लाइड में जब आपने डिस्कस किया था कि ये पिक करने के लिए कि ये CT स्कैन है या CMR, एक तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज नजर आ जाए तो बस कंफर्म हो जाएगा, फिर आपके लिए भलाई भलाई। लेकिन वैसे अगर आप देखें इसके अंदर आपको बोन्स वाइट नजर आ रही है, ठीक है। ये सारा हाइपरटेंस नजर आ रहा है, ये आपको रिब्स नजर आ रही है, साथ में ये आगे स्टर्नम नजर आ रहा है। तो ये आपका CMR के अंदर नजर नहीं आता। ये आपका या तो एक्सरेज के अंदर वाइट नजर आती है बोन, या फिर आपका CT स्कैन के अंदर नजर आती है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो राइट लेफ्ट का थोड़ा सा ओरिएंटेशन होनी चाहिए। वो ऐसा है कि या तो आपको स्कैन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको छोटा एक आर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये पेशेंट की राइट साइड है। अदरवाइज जो वो है, रूल है, वो ये है कि आपका जो लेफ्ट है वो पेशेंट का राइट होता है और आपका राइट पेशेंट का लेफ्ट होता है। ठीक है। तो इस ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको किसी लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर के ऊपर आपने कमेंट करना है तो आप उसको बताना पड़ेगा कि राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर है, तो इसलिए आपको ये ओरिएंटेशन जरूरी है। दूसरी चीज जो आपका एओर्टा है, वो एओर्टा पेशेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे स्पाइन के साथ बिल्कुल नजर आता है, एक तरफ एओर्टा नजर आ रहा होता है। तो इसमें कंट्रास्ट आपको जब नजर आ रहा है तो ये आपको राइट साइड के ऊपर आपको राइट साइड के ऊपर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर पेशेंट के एओर्टा होता है। ठीक है। तो इसकी पहले तो हम फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो है सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट एंड एक्सियल व्यू, dilated main pulmonary trunk and right pulmonary artery. There is a hypodense filling defect in the distal right pulmonary artery. There is an incidental finding which is an anomalous origin of a vessel from right side of the main trunk. ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ. So the diagnosis is acute pulmonary embolism with the anomalous right coronary artery from the pulmonary artery. अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपका ग्रेट वेसल्स के लेवल पे कट है, जो एक्सियल कट है आपका ग्रेट वेसल्स के लेवल पर है। ठीक है। इसमें जो आपको ये सर्कुलर पूरा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या एओर्टा है, इसके बिल्कुल साथ में जो पैरेलल चल रहा होता है वो आपका पल्मोनरी ट्रंक होता है। तो ये मेन पल्मोनरी ट्रंक है विच इज बाइफरकेटिंग इनटू टू। तो ये पेशेंट का राइट साइड है तो ये राइट पल्मोनरी ट्रंक है, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा आगे आकर तो ये कंट्रास्ट आपका चल रहा है और यहाँ पर एक आपको हाइपोडेंस एरिया मिल रहा है। तो ये फिलिंग डिफेक्ट है जो कि यहाँ पर आया और फिर उसके बाद आगे ये कंटिन्यू होगा। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्रेजेंटेशन में कि एक फीमेल पेशेंट ब्रेथलेसनेस के साथ शॉर्ट टाइम ब्रेथलेसनेस के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रही है तो वो एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है। तो ये अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अच्छा, जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग या इंसिडेंटल फाइंडिंग थी इसमें वो ये थी इस पेशेंट में कि जो मेन पल्मोनरी ट्रंक है उसमें नॉर्मली ट्रंक में कोई भी वेसल ड्रेन नहीं करती। ठीक है। वो आपका आर ए से आरवीओटी से जाकर वो ट्रंक डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में। तो आरवीओटी के बाद जब आप पल्मोनरी ट्रंक में जाते हैं तो वहां पर कोई भी वेसल ड्रेन नहीं करती। ठीक है। तो अगर तो वहां से कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है तो वो कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई एनॉमलस चीज है। अब वो एक आर्टीरियोवेनस फिस्टूला हो सकता है। फिस्टूला के लिए आपको दोनों कनेक्शन मिलेंगे। जैसे आर्टीरियोवेनस फिस्टूला आपका यूजुअली आर्टरी और वेन के बीच में होगा, वेनस ड्रेनेज और आर्टीरियल ड्रेनेज के बीच में। तो यहाँ मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। और चूंकि यहाँ से एक एनॉमलस आर्टरी या एक वेसल निकल रही है और वो राइट साइड ऑफ द पेशेंट की तरफ जा रही है तो वो आपका राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इस पेशेंट के अंदर ये, और वो पेशेंट आपका सिम्टोमेटिक नहीं होता, इसीलिए इसको अब तक यूजुअली जो आर कापा होता है उस वो पेशेंट इस तरह से सिम्टोमेटिक आपका नहीं होता। तो ये पेशेंट शायद अब तक सिम्टोमेटिक उस तरह ना रही हो या उसको कोई सिम्टम हो जो कि नहीं पता हो, बट ये इस पेशेंट के अंदर एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी जिसके शायद नंबर होंगे अगर इस तरह का स्कैन आपके पास आ गया। अच्छा, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेशन. Young male presented with atypical chest pain. This is the ECG, and the question is, what are the ECG findings? What is the diagnosis, and what is the next step? Okay, your time starts now. Time up. Okay.
So the key is the sinus rhythm ECG with a rate of 90 beats per minute approximately. The axis is normal. There is a tall R wave in V1. There is an absent normal R wave progression, and there is an inverted P and T wave in V3. So the diagnosis is V1 and V3 reversal, and the next step would be the repeat ECG with correct lead placement. अच्छा, अब इस ECG में हम अगर फर्स्ट लुक में देखें, इस एक तो ये है, अगर कोई भी ECG आपको फर्स्ट लुक में देखे आपको लगे कि ये नॉर्मल लग रही है, तो उसमें कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटी ढूंढनी है जो कि आइट्रोजेनिक, जिसे हम कहें कि या तो लीड रिवर्सल लीड रिवर्सल हो सकता है, या जो है वो पेशेंट को कोई अर्ली रिपोल टाइप की जिसमें कोई सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी ना हो। ठीक है, मगर इस ECG में जो एक सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी वो ये थी कि V1 के अंदर एक टॉल आर वेव है। अब टॉल आर वेव के डिफरेंशियल आपको पता होने चाहिए कि वो, ताकि आप उसे एक्सक्लूड करते जाएं कि पोस्टीरियर इंफार्क्ट तो नहीं है, RVH तो नहीं है, पेशेंट को WPW तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप रूल आउट करते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ये बहुत एबनॉर्मल लग रहा है। अगर आर वेव टॉल है, इधर राइट साइडेड आपको स्ट्रेन मिल रहा है, आप या RVH सोच रहे हैं, इस तरह की कोई चीज सोच रहे हैं, तो आपके V2 के अंदर भी आपको आर वेव मिलनी चाहिए। या डेक्स्ट्रोकार्डियो सोच रहे हैं तो V2 के अंदर भी आपको टॉल आर वेव मिलनी चाहिए। वो ग्रेजुअली आर वेव की जो हाइट है वो कम होनी, मगर यहाँ पर V1 के अंदर इतनी टॉल आर वेव है, फिर एकदम V2 के अंदर छोटी सी आर वेव आ गई, और फिर V3 के अंदर भी एक स्मॉल आर वेव है, फिर V4 V5 V6 के अंदर दोबारा टॉल आर वेव आ गई। तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल पैटर्न है ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन। तो ये आपकी एक फाइंडिंग। दूसरी चीज इसमें अगर देखें तो V3 के अंदर P वेव और T वेव आपकी इन्वर्टेड है, जो कि आपकी V1 के अंदर होती है, क्योंकि वो आपका राइट साइड पर होता है और ऑपोजिट आपका जो करंट होता है वो राइट साइड के ऑपोजिट जा रहा होता है। तो V3 V4 के अंदर अगर आपके इन्वर्टेड आ रही हैं तो ये आपकी फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं V1 के अंदर। तो आप यहाँ पे फिर क्लियरली कह सकते हैं कि ये V1 यहाँ लगनी थी और ये V3 यहाँ लगी, तो जो उसके ECG के नॉब्स थे वो एक्सचेंज हो गए शायद। ठीक है, तो ये एक अच्छी ECG मुझे मिली थी तो मैंने शेयर की थी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे पास ये 7 स्टेशंस थे, बाकी थैंक यू सो मच डॉक्टर मदिया, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और बड़े अच्छे स्टेशन थे, नीट एंड क्लीन। और मिसलिनियस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। मिसलिनियस स्टेशन को कवर किए बगैर आप लोग एग्जाम पास नहीं कर सकते, फॉर श्योर। So without wasting any time, I will show you my presentation। और जो लोग अभी तक हमारे साथ हैं उनके हौसले को दाद है। थोड़ी देर और हमारे साथ रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यू नेवर नो के ड्यूरिंग द एग्जाम आपको मेरी बातें, डॉक्टर मदिया की बातें, डॉक्टर नुमान की बातें याद आ रही हो और आपका एग्जाम पास हो जाए इंशाल्लाह। ओके, Dr. Madhya, can you see my screen? जी जी। Okay, Ji. So I'm going to show you my first station. So the first station is 68-year-old diabetic and hypertensive male presented to you with history of chest pain on exertion. He underwent myocardial perfusion imaging as shown. What are the findings and what is your interpretation? The time has started now. Okay, Ji. Time up. So
इससे पहले कि मैं आपको फाइंडिंग्स बताऊं, आई वांट टू शो यू दिस स्लाइड। ये स्लाइड आपको याद होनी चाहिए अगर आप इस किस्म के स्कैन को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। एंड इट इज ऑल अबाउट द कलर्स। यू मस्ट नो कि कौन सा कलर शो हो रहा है और उस कलर की क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है। फॉरगेट दीज। Okay, so can you see my laser pointer? जी जी। Okay, so forget these values 100 to 70% and 70 to 50%, इसको आप भूल जाएं। Just remember normal, mild, moderate, severe and absent। सबसे पहले तो आप दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे चले जाएं। अगर आपको येलो या ऑरेंज येलोइश कलर, आपको गोल्डन येलो कलर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल परफ्यूजन हो रही है। इट मीन्स के मेरा स्कैन अगर होगा तो वो ये कलर शो करेगा तमाम वॉल्स के अंदर। और अगर कहीं पे स्कार बना हुआ है तो वहां पर आपको ब्लैक या ग्रेइश ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक इस किस्म का कलर आपको शो होगा। जब आपको ये कलर शो हो, इसका मतलब ये है कि वहां पे अ, जो रेडियो आइसोटोप है वो पहुंचा ही नहीं है। और रेडियो आइसोटोप तो उस वक्त पहुंचेगा जब वहां पे ब्लड फ्लो पहुंचेगा। तो अगर वहां पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब वहां पे इस्कीमिया है। ठीक हो गया। वन वे और दी अदर वे, आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप वहां तक नहीं पहुंचा है, वहां पे ब्लड नहीं जा रहा है, इट मींस दैट एरिया इज डेड। जो दो एक्सट्रीम तो आपने देख लिया। अब आ जाए आप दरमियान की तीन चीजों पे, माइल्ड, मॉडरेट, स्फेयर। सो इफ यू हैव पिंकिश कलर, पिंकिश, you have mild. If you have greenish color, you have severe. And if you have purple to bluish color, this is moderate. तो अगर आपके पास पिंकिश टेक्सचर मिल रहा है तो आप माइल्ड टू मॉडरेट सोच सकते हैं। अगर आपके पास पर्पल टू ब्लू मिल रहा है तो आप मॉडरेट सोच सकते हैं, मॉडरेट टू सिवियर। अगर आपको ग्रीन से ब्लैकिश की तरफ जाता हुआ कुछ नजर आ रहा है तो आप सिवियर सोच सकते हैं इसके अंदर। और अगर कोई जेट ब्लैक मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आप सोचें कि भी यहाँ पे स्कार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं अब आप वापस आए स्कैन के ऊपर। ये स्कैन 10/10 मार्क्स देने वाला स्कैन है, इसलिए आपको ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। What I used to do, मैं उनको बताता होता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये वाइबिलिटी स्कैन है या स्ट्रेस स्कैन है। उसका सबसे आसान तरीका क्या है? जस्ट लुक एट द मार्किंग्स। ये यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे रेस्ट लिखा हुआ है। टीसी मीन्स टेक्नीशियन। तो इनिशियली आपको शॉर्ट एक्सेस व्यू मिलेंगे जस्ट लाइक एको। फिर उसके बाद नीचे आपको ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल व्यू बट इट इज अ वर्टिकल कट सेक्शन। और इसके नीचे ये जो आपको वर्टिकल कट सेक्शन, वर्टिकल व्यू मिल रहे हैं, एक्चुअली इज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन। टेक्निकली हम इनको ऐसे बोलते होते हैं। हाउ टू पिक अप द फाइंडिंग्स? वेरी इजी। सो दीज आर, अगर आप इस स्लाइसेस को गिने तो ये बनते हैं कोई टोटल 1 2 4 5 6 12 बनते हैं। ठीक है जी। तो 12 को आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि 4 स्लाइसेस। सो जो शुरू के 4 स्लाइसेस हैं ये एपिकल हो गए, 2 ये और उसके बाद फिर 2 ये मिडल सेगमेंट हो गए। और बाकी जो 4 हो गए ये बेसल सेगमेंट हो गए। किसके सेगमेंट हो गए? लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी के ये स्कैन हो गए, सेगमेंट्स हो गए। ठीक हो गया। सो एक होता है सेगमेंट्स, एक होती है वॉल, एक होती है कैविटी। तो आपने सेगमेंट्स तो डिवाइड कर लिया। अब आप आ जाए वॉल की तरफ। वॉल आप किसी भी डोनट शेप कैविटी को ले लें और आप उसको 4 वॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज द एंटीरियर वॉल, दिस वन इज द इंफीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल भी कहते हैं इसको। दिस वन इज द सेप्टल वॉल बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल होता है। एंड दिस इज द लैटरल वॉल। अब एपिकल व्यू से शुरू हो जाएं और बेसल सेगमेंट तक चले जाएं, आपके 4 वॉल हर जगह पे मिलने चाहिए। फर्दर अगर आप उनको डिवाइड करना चाहें तो आप इनको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये एंटीरियर वॉल है तो इस एंटीरियर वॉल को आप 2 हिस्सों में मजीद डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियो सेप्टल वॉल, एंटीरियो लैटरल वॉल। इसी तरह आप इंफीरियर वॉल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेप्टम की तरफ है उसे आप कहेंगे इंफीरियो सेप्टल वॉल और जो लैटरल की तरफ है उसे कहेंगे इंफीरियो लैटरल वॉल। ठीक होगी। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स। यू नो द कैविटी, यू नो द सेगमेंट्स। अब आ जाए कलर्स के ऊपर। सो आई एम गोइंग टू लुक एट ऑल दी वॉल्स। तो सबसे पहले ये जो 4 एपिकल सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं जो सबसे अच्छी फाइंडिंग्स पिक कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है जी? मुझे ये एंटीरियर वॉल और एंटीरियर सेप्टल वॉल ये मिल रही है मुझे पर्पलिश कलर की, ब्लूइश पर्पलिश कलर की। और ये स्कैन कौन सा है? ये स्ट्रेस स्कैन है। जैसे ये रेस्ट में जाता है तो वो पर्पल कलर गायब हो जाता है और येलोश कलर वापस आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला? सबसे पहले तो हमें पता ये चला
कि ये जो आपका स्कैन है जो पर्पलिश कलर तक गया था, ये किस तरफ आता है? पर्पलिश कलर कहाँ तक आता है? तो माइल्ड टू मॉडरेट के दरमियान में ये। सो देर इज अ माइल्ड टू मॉडरेट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है? यहाँ पर हम क्या देख रहे होते हैं, किस चीज के लिए देख रहे होते हैं? हम परफ्यूजन देख रहे होते हैं। दिस इज अ माइल्ड टू मॉडरेट परफ्यूजन डिफेक्ट। नाउ द थिंग इज दिस इज रिवर्सिबल और नॉट। अगर पर्पल कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए रेस्ट स्कैन के ऊपर, तो इट इज रिवर्सिबल। तो जब आप ये 3-4 बातें बताएंगे तो आपके नंबर कट नहीं सकते। अब इसी बात को अगर मैं राइट डाउन करूंगा तो मैं इसको कैसे राइट डाउन करूंगा? मैं इसको ऐसे राइट डाउन करूंगा। देयर इज ए mild to moderate reversible perfusion defect involving the apical segment of anterior and anteroseptal wall, full stop। तो ये अभी सिर्फ मैंने एपिकल जो सेगमेंट्स हैं उनको देखा है और वहां से फाइंडिंग्स पिक की हैं। अब मैं जा रहा हूँ मिड सेगमेंट्स की तरफ। मिड सेगमेंट्स के अंदर भी मुझे यहाँ पे डिफेक्ट मिल रहा है जो कि रेस्ट स्कैन के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा? देर इज ए माइल्ड टू मॉडरेट रिवर्सिबल परफ्यूजन डिफेक्ट involving the apical and mid segment of anterior wall and anteroseptal wall, full stop। अब जब आप ये लाइन लिखकर आएंगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं डिटेक्ट कर सकता, गारंटीड। ठीक हो गया? क्या बेसल सेगमेंट्स में कोई आपको इस तरह की चीज मिल रही है? नहीं, बेसल सेगमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपकी एक फाइंडिंग पिक होगी। दूसरी फाइंडिंग, आप दूसरी वॉल को देखें, इंफीरियर वॉल को देखें। यहाँ पे कलर क्या है और यहाँ पे कलर क्या है? यहाँ पे कलर क्या है और यहाँ पे कलर क्या है? यहाँ पे कलर क्या है और यहाँ पे कलर क्या है? इट मीन्स आपकी जो इंफीरियर वॉल है वो भी इन्वॉल्व है। पर्पलिश कलर था जो कि रेस्ट के ऊपर येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फाइंडिंग्स, जस्ट टेरिटरी चेंज हो गई है। ठीक हो गया? सो माइल्ड टू मॉडरेट रिवर्सिबल perfusion defect involving the inferior wall, involving the apical and mid segment of inferior wall, simple as that। ठीक हो गया जी? इन्हीं फाइंडिंग्स को आप नीचे के जो कट सेक्शन है उनमें कंफर्म भी कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि जी एपिकल सेगमेंट्स में और मिड सेगमेंट्स में एंटीरियर वॉल के अंदर डिफेक्ट है। आप ये देखें, दिस इज द एंटीरियर वॉल, दिस इज द इंफीरियर वॉल एंड दिस इज द एल्वी एपिक्स। तो ये देखें, ये एपिक्स के पास कौन सा सेगमेंट होगा? एपिकल सेगमेंट होगा, और फिर यहाँ जाके मिड सेगमेंट आ जाएगा। यहाँ पर्पल कलर आपको शो हो रहा है, यही कलर आप नीचे देखें तो ये येलो में कन्वर्ट हो चुका है। तो वही फाइंडिंग्स जो आपने यहाँ देखी थी वही आप नीचे कंफर्म कर सकते हैं, अगर अगर आप शक का शिकार हैं तो। अदरवाइज आप जस्ट उसी को रिलाई करके उसी फाइंडिंग्स पे आप जस्ट राइट इट डाउन। 3 मिनट्स होते हैं आपके पास। तो 2 फाइंडिंग्स तो आपको ये मिल गई, एक एंटीरियर वॉल की, एक इंफीरियर वॉल की। तीसरी फाइंडिंग्स में क्या है? आप देखें, जो एलवी एपिक्स है जो कि आपको शॉर्ट एक्सिस में इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, ट्रू एलवी एपिक्स, वो आपको इन कट सेक्शन में ज्यादा अच्छा नजर आएगा या नीचे वाले कट सेक्शन में ज्यादा अच्छा नजर आएगा। अब आप इसको यहाँ देखें, एलवी एपिक्स यहाँ पर्पल कलर है जो कि थोड़ा सा येलोश कलर में चेंज होता है। पर्पल कलर, पर्पल कलर, एलवी एपिक्स, पर्पल कलर, पर्पल कलर। तो देर इज अ परफ्यूजन डिफेक्ट, माइल्ड टू मॉडरेट परफ्यूजन डिफेक्ट, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। जितना है वो उतना का उतना ही रहता है, या अगर आप थोड़ा सा रिवर्सिबल बनाना भी चाह रहे हैं तो इट इज जस्ट माइल्डली रिवर्सिबल, कि यहाँ पर पर्पल था तो थोड़ा सा टिंज आना शुरू हुआ है येलो कलर का। ठीक हो गया जी? अब ये भी एक फाइंडिंग है 12 के एपिक्स की, परफ्यूजन डिफेक्ट आपको वहां मिल रहा है, ये भी आपने इसमें राइट डाउन करना है। ये तीसरी फाइंडिंग होगी। चौथी फाइंडिंग इसमें सबसे अच्छी क्या नजर आ रही है? इस्कीमिक डायलेशन, डायलेटेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी। अब जब आप ये 4 फाइंडिंग्स लिखकर आएंगे ठक ठक एग्जाम में, तो आपके 10/10 मार्क्स मिलेंगे, गारंटीड है इसके अंदर। सो यू नो देयर इज इस्कीमिया, 2 वेसल इस्कीमिया। एंटीरियर वॉल इन्वॉल्व है, इसका मतलब एलईडी इन्वॉल्व है। इंफीरियर वॉल इन्वॉल्व है, हो सकता है सर को, हो सकता है आरसी हो, और एलवी डायलेटेड है, इट इज अ कार्डियोमायोपैथी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? दिस इज अ इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, सिंपल एज दैट। ये हमने सब गो थ्रू कर लिया इसके अंदर से। Session number 2. A 29-year-old female presented with history of recurrent palpitations. She had multiple visits in ER and tells she gets better with a particular injection. What are the findings in the strip shown? What is your impression? And what is the definitive therapy? Your time starts now.
Okay, time up. So everyone knows this is an EP strip, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी हुई है और इसमें से एक स्ट्रिप दिखाई गई आपको और फाइंडिंग्स इसमें आपने पिक करनी है। पहली फाइंडिंग क्या है? सबसे पहले आप देखिए इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, लीड 1, लीड 2 एंड जस्ट लीड V1। उसके बाद HRA, हिज प्रॉक्सिमल, जो कि इतना अच्छा EGM शो नहीं कर रहा, यू कैन इग्नोर इट। हिज डिस्टल, सो यू हैव EGMs from the his, CS910, CS12. 12 is the distal end and 910 is the proximal end, and RV proximal. So you have EGMs from right atrium, from the bundle of his, from the CS, that is a projection, and that is a catheter which picks up the signals from left atrium and left ventricle because it is on the left side, and right ventricle. पहली फाइंडिंग आपने जो पिक करनी है वो आपने पिक करनी है that there is a narrow QRS complex tachycardia, number 1. दूसरी फाइंडिंग जो आपने पिक करनी है, you know this is the QRS complex and you know this is the atrial EGM. So this is the V and this is the A. So the distance from the V to A is short. Traditionally, if it is less than 70 millisecond, we call it short VA tachycardia. It is just like short RP tachycardia. ECG पे RP की कट ऑफ होती है 90 और यहाँ पे कट ऑफ होती है 70. First of all, narrow QRS complex tachycardia. Second finding, short VA. Third finding, if this is the V, क्योंकि QRS complex के साथ आ रहा है, ठीक है, और जो A है वो यहाँ पे छोटा सा A आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे छोटा सा A है जो कि इसमें मर्ज हो गया है, आपको दिखाना बहुत मुश्किल है। सो जस्ट फॉर नाउ जस्ट बिलीव मी कि A जो है इस बड़े सिग्नल के अंदर मर्ज हुआ, ठीक हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? तीसरा सिग्नल जो बच गया है वो बंडल ऑफ एस का सिग्नल, ठीक हो गया। सो देयर इज अ थिंग which we called concentric activation and eccentric activation. Concentric activation का मतलब ये है कि इस कैथेटर ने आपको राइट एट्रियम की एक्टिविटी के बारे में बताया कि यहाँ से इम्पल्स गुजरी है और ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन आ गई। इसी तरह हिस डिस्टल जो है वो भी एक वर्टिकल लाइन बनाएगा जो कि यहाँ पे अलग आपको नजर नहीं आ रही। और इसके बाद CS910 से लेके 12 तक ये भी आपको अलग एट्रियल EGM दिखाएंगे, जैसे कि 12 में बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको सेपरेटेड है। दिस वन इज द एट्रियल EGM एंड दिस वन इज द वेंट्रिकल EGM। और जैसे जैसे आप CS910 की तरफ जा रहे हैं इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन आपको मिल रही है विच इज नॉट एन एबनॉर्मल सेपरेशन, एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। सो इफ यू कंपेयर ऑल द एट्रियल EGMs, आप CS से एट्रियल EGM उठाएं, फिर उसके बाद RA से उठाएं और फिर उसके बाद हिस से उठाएं, तो सबसे पहले आ रहा है अर्लीस्ट A, जिस कैथेटर में आ रहा है इट डिपेंड्स कि आप उसको कंसेंट्रिक एक्टिवेशन कहते हैं या एक्सेंट्रिक एक्टिवेशन कहते हैं। सो यू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड। आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले सिग्नल कौन सा आ रहा है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएं तो हमें सबसे पहले सिग्नल आ रहा है हिस का, ठीक है, बाकी सारे सिग्नल बाद में आ रहे हैं। सो इफ आई टेल यू कि एट्रियल EGM हिस के अंदर ये है जगह पे, और आप इसको कंपेयर करें इस EGM के साथ और इस EGM के साथ, तो आपको लगेगा कि ये एट्रियल EGM पहले आ रहा है इस एट्रियल EGM की निस्बत और इस एट्रियल EGM की निस्बत। अगर आपका अर्लीस्ट A हिस कैथेटर में आ रहा है, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक एक्टिवेशन। वाई? क्योंकि हिस का कैथेटर कहाँ पड़ा हुआ है? AV नोड के पास, और AV नोड कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेंट्रिक के अंदर, इसलिए इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक एक्टिवेशन। इसके अलावा अगर कहीं और किसी भी जगह पे आपको अर्लीस्ट एट्रियल EGM नजर आए, हम उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक एक्टिवेशन, सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। तो ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आपको ये समझ आए कि आपने इसमें क्या लिखना है, कंसेंट्रिक एक्टिवेशन। अगली फाइंडिंग इसमें क्या है? देयर इज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और उसका प्रूफ क्या है? आप CS910 में देखें, इनको सेपरेट करना कितना मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही इसमें से वेंट्रिकल EGM कौन सा और एट्रियल EGM कौन सा, they are combined, and this is the reason you have a short VA interval of less than 70 millisecond. So this आपको देखने में लगेगा सब सारे EGMs जो है ना वो ऑलमोस्ट एक लाइन में जमा होना शुरू हो गए। ये सारी फाइंडिंग्स अगर आपको आपकी EP स्ट्रिप पे नजर आ रही हैं
So this is the diagnosis will be that the patient is having AV-NRD, AV nodal reentrant tachycardia. Simple as that. तो आपने सारी फाइंडिंग्स में लिख आनी, मैं रिपीट कर देता हूँ. नंबर 1 नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया. नंबर 2 शॉर्ट VA इंटरवल. नंबर 3 कंसेंट्रिक atrial activation pattern. Number 4 simultaneous activation of atrium and ventricle. जब आप चार फाइंडिंग्स लिखकर आएंगे तो आपकी फाइंडिंग्स के मार्क्स कटेंगे नहीं. Diagnosis is of course AV-NRD, and what is the definitive therapy? So you have to do the ablation of slow pathway, and you will get rid of this tachycardia for sure. Okay, ji, next station. A 66-year-old male presented with complaints of low pulse rate. ETT was done. The question: what are the findings in both ECGs? दो ECGs आपको दिखाएंगे. Will you refer the patient to electrophysiologist? And what is the definitive therapy? So this is the ECG one. Your time starts now. And this is the second ECG. And remember, the patient was doing ETT. First ECG. And the second ECG. Okay, timer. So the question was, what are the findings in both ECGs? So ECG one की finding क्या है? Number 1, you have a right bundle branch block. ठीक हो गया. Number 2, this P wave conducts with a significant normal PR interval, and then you have another P wave which is not conducted to form a QRS complex, and the cycle repeats again and again. You can see here in the rhythm strip again and again. There is a 2:1 AV block with right bundle branch block pattern. Okay, and the heart rate is approximately around about 50 to 40. What is happening in the ECG2? Again, you have a right bundle branch block. You have P waves, but what has happened? The obvious finding is that the R to R interval is showing that the patient has improved the heart rate. As soon as the patient has improved the heart rate because of the ETT, क्योंकि वो patient जो है वो treadmill के ऊपर है, but what is the next finding? वो जो 2:1 conduction थी या 2:1 block था, look what happened there. Here you have one P wave not conducted, second P wave not conducted, third P wave conducted. You have a 3:1 AV block, which is a high grade AV block. Again, one P wave not conducted, one P wave conducted. One P wave. The P wave is hidden in the T wave. That is why its amplitude is different. P wave not conducted, P wave not conducted, P wave conducted. 3 में से A conduct हुए. 3:1 AV block, which is a high grade AV block. If you have a high grade AV block, will you refer the patient to the electrophysiologist? Yes, definitely you will refer the patient to the electrophysiologist. And what is the definite therapy? If your patient has high grade AV block, what you should do? You should implant a permanent pacemaker. The clue was 66-year-old. As soon you cross the age of 60, you get all these degenerative changes in the SA node and the AV node. Look here the amplitude of the P wave here in the ECG1. Look here at the amplitude of the T wave here. And look here at the amplitude of the T wave here. It is different. It has increased. You mean there is something hidden in here. This is the clues to pick up the hidden P wave. Okay. And this is the usefulness of ETT in bradyarrhythmias. Session 4. 45-year-old female presented with occasional palpitations and dizziness, which remain for a few seconds. Her ECG is absolutely normal currently. She was taken to EP lab and diagnostic EP was done.
An EGM strip is shown while patient is being paced from the right atrium. Question: what are the findings? What is your impression regarding the EP strip? Will you advise permanent pacemaker to this patient? And here is the EP strip, and your time starts now. Time up. So the first question was, what are the findings? Okay, here we go. So they have told you that paced from right atrium. So right atrium से pace कर रहे हैं, fine. This is lead 1, lead 2, AVF and V1. And these are the P waves. P waves, then the QRS complex. And you are pacing from the right atrium. It means you should have a pacing spike before each P wave. If this is the pacing spike from up to down, here you can correlate in the HRA, high right atrium, that this is the pacing spike. And after the pacing spike on the ECG, you will see the P wave formation, whereas on the EGM, you will see another signal, which looks like vibration. This is actually the atrial signal, which is formed due to this pacing. So after each pacing artifact, you will have this atrial EGM. After each pacing artifact, you will have this EGM, and the thing will go on. Okay. So you have this high right atrium, right atrial signals. Then you have right ventricle A for apex, right ventricle signals. For each QRS complex, you will have a signal in the EGM signal in the right ventricle. And in between is the AV node, and close to the AV node is the His bundle, where you put this catheter, which records the signals in the His catheter. So if this is the pacing artifact, this must also be the pacing artifact. And if this is the atrial EGM, this must also be the atrial EGM. Other way to look at it, if this is A, it must coincide with the P wave. And here you have these P waves. And at the same time, you have this atrial EGM. Crystal clear, nothing to worry about. This is the QRS complex. If something is coinciding with the QRS complex, that must be V and nothing else. Same here, you have V in the RV. And then the His channel, you have this broad vibration type signal, which starts from here and ends here. This is the broad signal. This all corresponds to the V in the EP study. So if this is the A and this is the V, then what is this? This is the H. Simple as that. It means this is A, this is H, this is V. Now, if I can write here, can you see the alphabets? Okay. So this is the atrial, this is the H, and this is the V, and this is the pacing spike. Fine. So this is the AH interval. AH interval is just like PR interval. Simple as that. Now another cardiac cycle starts. This is the pacing spike. This is A. This is V because it corresponds with the QRS complex. What is this? It's H. What is the difference here and what is the difference here? The AH interval has lengthened. It is just like the PR interval has lengthened. Okay, fine. Let us continue. This is the pacing spike. If this is the pacing spike, it means here is the pacing spike as well. For a sure shot, if this is the atrial EGM, then this is the A signal. Okay. So what comes next? What comes next after A? After A, H comes next. But if you go here, there is a sharp signal which corresponds with the pacing spike. This is again a pacing spike, like this. And then you have this atrial EGM, which corresponds with this
atrial. Then you have this QRS complex, which corresponds with this V, and in between A and V, you have this signal which is called S signal. So where is the S signal here? And then where is the V signal here? ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप इंग्लिश में लिख कर आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, सिंपल एज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मैं इतना टाइम आपको बताने पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने लिखना क्या है और कैसे उसको 2 लाइनों के अंदर बात खत्म कर देनी है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका AH इंटरवल प्रोग्रेसिवली लेंथन हो रहा है until you have no H सिग्नल, यानी इम्पल्स एट्रियम से चली और बंडल ऑफ हिस तक पहुंची नहीं है। जब बंडल ऑफ हिस तक नहीं पहुंची तो आगे QRS तक कैसे पहुंचेगी, वेंट्रिकल तक कैसे जाएगी? तो हिस पहुंचने से पहले ही ब्लॉक आ गया। अगर हिस पहुंचने से पहले ही ब्लॉक आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, सुप्राहिजियन ब्लॉक, कि उससे पहले खत्म हो गया। अगर हिस का सिग्नल यहाँ पे शो होता और हिस का सिग्नल शो होने के बाद QRS शो ना होता या V सिग्नल आता, हम इसको कहते हैं इंफ्राहिजियन ब्लॉक। तो जो सुप्राहिजियन ब्लॉक होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे वेंकी बैक फिनोमेना। जैसे ECG पे आप देखते हैं PR इंटरवल प्रोग्रेसिवली लैक्टेस until there is a dropped QRS complex। तो वो जो आप ECG के ऊपर वेंकी बैक देखते हैं, अब आप इस वक्त EP स्टडी के ऊपर वेंकी बैक देख रहे हैं। And the same cycle will repeat again here. Clear हो गया जी? So these are the findings जो कि आपने यहाँ पे नोट करके आपने उसके अंदर बतानी है सारी की सारी। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन था व्हाट इज योर इंप्रेशन रिगार्डिंग EP स्ट्रिप। इंप्रेशन क्या है? वेंकी बैक है, मोबिल टाइप 1 है, वो आपने बता देना है। विल यू एडवाइस परमानेंट पेसमेकर टू दिस पेशेंट। तो क्या हम सुपरहिजियन ब्लॉक के अंदर पेसमेकर एडवाइस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक हो गया। तो पेशेंट को जो पैल्पिटेशंस और डिजीनेस हो रही है उसका कंडक्शन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन एंड यू हैव टू डिग इट आउट। तो हर चीज जो है वो पेसमेकर के जिम्मे नहीं डाल देनी आपने, यू हैव टू डिग आउट द रीजन। दैट इज व्हाई एट्रियम से पेसिंग की गई थी। अगर हम एट्रियम से पेसिंग ना करते कभी भी हमें पता ना लगता कि इनको सुपरहिजियन ब्लॉक है पेशेंट को या इंफ्राहिजियन ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 55-year-old diabetic hypertensive female presents with complaints of difficulty to pass urine. Creatinine is 2.5. ECG, what are the findings in the strip shown? What is your impression and what is the definitive therapy? Your time starts now. ओके जी, टाइम अप। सो व्हाट आर दी फाइंडिंग्स? फाइंडिंग्स क्या है जी? सबसे पहले तो आपको ब्रॉड क्यूरस कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, आपको यहाँ पी वेव एक्सपेक्टेड है जो कि आपको नहीं मिल रही। एब्सेंट पी वेव, ब्रॉड क्यूरस कॉम्प्लेक्स, राइट बंडल टाइप मॉर्फोलॉजी, एंड you have a tall tented T wave. So number 1, absent P wave. Number 2, broad QRS complex. Number 3, right bundle morphology. Number 4, tall tented T wave. जब आप ये सारी फाइंडिंग्स लिखकर आएंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगी कि आप किस तरह बात करना चाह रहे हैं। What is your impression? क्या impression है? So we have a increase in potassium level, that is the hyperkalemia. And what is the definitive therapy? You know, डी पोटाश करना है, क्या एक्सिलेट वगैरह, वो सारी बातें फिर आप उसके अंदर मेंशन करके आएंगे। ठीक हो गया जी? Let's move to the next station. A 17-year-old female presented with history of recurrent palpitations. She had multiple visits in ER due to syncope. Question number 1, what are the ECG findings? Question number 2, what is the most likely diagnosis? Question number 3, name the gene, ion channel, and mutation involved in this disease. Your time starts now.
ओके जी, टाइम अप। सो फाइंडिंग्स इसके अंदर क्या है, बड़ी ऑब्वियस फाइंडिंग्स हैं कि आपको इसमें क्या मिला है। पहली बात तो साइनस रिदम, ठीक है जी। साइनस रिदम है, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं। आपको टी वेव V2 में, V3 में, V1 में इन्वर्ट मिल रही है, ठीक हो गया। बट द मोस्ट important thing is you have a prolonged QT interval. You have a prolonged QT interval. And most important thing in this QT interval is that you have a prolonged ST segment. The T wave is small, but you have a prolonged ST segment. The QT prolongation is actually due to the prolongation of the ST segment. So you have the history: 70-year-old female, recurrent palpitations, syncope, long QT interval, and long ST segment. What is the most likely diagnosis? So this is a congenital long QT syndrome type 3. Name the gene involved. So we know long QT3 में कौन सा gene involved है? सोडियम होता है। सोडियम आयन इन्वॉल्व होता है। जीन कौन सा होता है? SCN5A जीन इस्तेमाल होता है, यूज होता है इसके अंदर। और जो म्यूटेशन है वो क्या है इसके अंदर? यू हैव अ गेन ऑफ फंक्शन, ठीक। So if you are going to write on all these findings crystal clearly, you are going to get 10 by 10 marks for sure, shot, guaranteed. So the last station, station number 7, 66-year-old male presents with following ECG. He gives you history about a device implantation. What are the ECG findings? Is the device functioning normally? What are the causes of abnormality shown in ECG? Okay, time is up. So this is the ECG, and the most obvious finding in this ECG that this is not this is not an ECG without a pacemaker. Why? Because this is an ECG which is showing you pacing spikes. So you have one pacing spike and you have another pacing spike. So this pacing spike is for P wave and this pacing spike is for QRS complex. So you have, it means you have one lead in the atrium and you have one lead in the ventricle. This means you have a dual chamber pacemaker. पहली फाइंडिंग तो इसके अंदर ये आ गई। दूसरी फाइंडिंग इसके अंदर ये आ गई। अब आपको पता चल गया कि इसमें दो लीड्स हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड atrial lead and ventricular lead functional normal है या नहीं है. So what you see, is it pacing normally or not? Number 2, is it capturing properly or not? And number 3, अगर आपको native without paced P wave मिल जाए तो क्या सेंसिंग उसकी सही है कि नहीं है? और अगर आपको नेटिव विदाउट पेस्ट QRS कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो क्या उसकी सेंसिंग सही है या नहीं? तो अगर आप एट्रियल लीड की यहाँ पे बात करें तो यू हैव अ पेसिंग स्पाइक which is occurring regularly at regular time, but after each pacing spike there is no P wave. After each pacing spike there is no P wave. There is no P wave after each. So you have pacing but you do not have any capture. And I'm not able to see any native P wave, so I cannot comment कि sensing normal है या नहीं. Similarly with the ventricle, so you have a pacing spike, ventricular pacing spike, which is coming at regular intervals. So the pacing is normal. And after each pacing spike, you have a paced QRS complex. So how you know this is a paced QRS complex? Because the QRS complex, the width of the QRS complex gets wide. Of course, we have this at regular interval. So the pacing is normal, the capture is normal. There is no native QRS complex, so I cannot comment on the
sensing of the ventricular lead. These are the findings. Number 2 is the device functioning normally. So the atrial lead is not functioning normally. So overall, the device is not functioning normally because you will not be able to maintain AV synchrony. The whole purpose of dual chamber pacemaker is to maintain the natural atrioventricular synchrony. Okay. Otherwise, single chamber लगाकर भी आप ventricle rate तो आप achieve कर सकते हैं. And what are the causes of abnormality shown? कौन सी causes हैं जिनकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि एट्रियल लीड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नंबर 1, लीड डिस्लॉजमेंट, कि लीड जो है वो उस जगह से हिल गई है जहाँ पे आपने उसको लगाया था, है एट्रिया के अंदर ही, एट्रिया से निकल के कहीं और नहीं गई, लेकिन प्रॉपर मायोकार्डियम के साथ अटैचमेंट उसकी नहीं रही जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर कैप्चर हो सके. और नंबर 2, इंसुलेशन ब्रेक हो जाए तो उसके अंदर भी आपके पास कैप्चर लूज होना शुरू हो जाता है. Okay जी, great. So finally we have done the tonight's TOACS mock examination, and I hope that everyone would have got this idea how the things work, what are the tips and tricks. ये जो आपने यहाँ सारे स्टेशंस देखे हैं, आई गारंटी यू इनमें से बहुत सारे स्टेशंस आपके एग्जाम में आए होंगे. जो बातें डॉक्टर नौमान ने आपको बताई हैं, जो बातें डॉक्टर मदिहा ने आपको बताई हैं, कुछ बातें मैंने आपको बताई, उनको अपने जहन में रखिएगा. The key to success is to stay consistent and practice all the time. जब तक आपके एग्जाम की डेट आई थिंक 12 है, टेंटेटिव डेट, फाइनल तो अभी ईमेल शायद किसी को नहीं आई, लेकिन जब भी वो डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा. जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. ओके. और जो आपके क्वेश्चंस हैं, आई कैन नॉट टेक ऑल द क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस जस्ट गो ऑन आवर न्यू ग्रुप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ टुमारो पाकिस्तान, मेक अ सेपरेट पोस्ट, just tag me or Dr. Madiha or Dr. Nauman. We are going to answer you in the group. अभी आंसर करना बहुत मुश्किल है. We are happy to take your questions because this is the time to ask the questions. बाद में questions आप पूछेंगे तो फायदा कोई नहीं और एग्जाम आपका गुजर जाएगा. Any last advice to our participants, Dr. Madiha? बस आपने सारी एडवाइस कर दी है अच्छी खासी. बस ये है कि पेशेंट, ये जो आपके टॉक सेशन, इसके लिए इम्पोर्टेंट जो टिप है वो यही है कि आप स्टेशंस तो पिक कर लेते, लेकिन जो उसमें आपने मसला जो आता है, जो हम रह जाते हैं सारे टोटल नंबर, कंप्लीट नंबर, जो पासिंग नंबर होते हैं वो लेने से, वो मसला आता है कि हम जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पूरे नहीं देते होते जो उन्होंने पूछे होते हैं. तो वो आंसर्स आपने पूरे देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और पूरे नंबर मिलेंगे तो फिर आपके जो है वो आपका, क्योंकि हम जब आते हैं बाहर निकलते हैं टॉक्स देकर तो हमें लगता है हमारा वो स्टेशन भी ठीक हो गया था, वो स्टेशन भी ठीक हो गया था, लेकिन वो स्टेशन आप पिक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके आंसर्स जब तक आप उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देते तब तक पूरे नंबर नहीं मिलते और वहाँ मार्क्स लूज कर जाते हैं, और उसकी वजह से फिर वो मार्जिन पे हमारा रह जाता है एग्जाम ना. तो वो ये कोशिश करें, क्योंकि इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं, प्रैक्टिस कर ली है, पिक आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो उसके क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन, उन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें. बाकी तो इंशाल्लाह गुड लक. जितने भी काफ़ी ज़्यादा हमारे माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स थे, मैं देख रही थी अभी तक भी 100+ ही चल रहे थे, वो सब देख रहे थे. तो अल्लाह करे सबका ही एग्ज़ाम पास हो. और अब तो टॉक्स पास करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में फिर आप क्लिनिकल देते होते हैं. तो मेरी तरफ से थैंक यू. Thank you, Ji. Thank you so much. Best wishes. We are available on the group. You can contact us every time. वैसे भी आपके पास, I don't know, सबके पास मेरा WhatsApp नंबर है, तो सब कांटेक्ट करते रहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर. लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ग्रुप में पोस्ट करें, क्योंकि जब आपका जो क्वेश्चन आपका होता है वो नहीं सिर्फ आपका क्वेश्चन हो सकता है 50 और लोग हैं वो भी यही बात सोच रहे होते हैं, तो आपकी वजह से 50 लोगों का फायदा हो जाता है. जैसे हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, मुझे तो इस सेशन के करने का कोई फायदा नहीं है ना, ये तो आप लोगों के लिए है. तो इसी तरह जब आप ग्रुप के अंदर कमेंट करेंगे तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा. तो वो ग्रुप बनाया ही इसलिए गया है कि आप उस पर कमेंट करें, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करें. मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर उनको कहता हूँ कि आप काइंडली ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए जो भी आपकी ईसीजी है, जो भी आपका सवाल है, और मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर. With this, thank you so much for joining us and wish you best of luck. Let's see if we can arrange something else for you. Till that time, Allah Hafiz. Okay.